1100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती. कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस. तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई, ऐसा नहीं होता. आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है. गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज very, very seriously, because this country has voted you in that time only with trust and faith against all this. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे बहुत एक्टिव होते हैं. मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पे हक है. तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके दो अलग ट्वीट्स आए. एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर. इंडिया, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया, इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड. ये उनका कहना है. आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट. देन इट इज सेड at 27 to 22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They, as an opposition, never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying, sir. Even I'll give you the second example. ये जो कह रहे थे, बड़ी टीका टिप्पणी की दुबे जी ने, बहुत अच्छा बोले, हमेशा बोलते हैं पढ़ लिख के आते हैं, तो हम लोग भी एंजॉय करते हैं. अच्छे भाषण सुनना अच्छा है, हम लोग भी एक दूसरे से सब सीखते हैं. उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है देश में, करप्शन, भले नहीं पता क्या नहीं क्या क्या बोले. उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के बारे में बोले, काफी बोले, अच्छी बात है. एनीबडी इज गोइंग टू क्लीन अप द सिस्टम, वी ऑल यूनाइटेडली स्टैंड इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम. बट उन्होंने एक सवाल जो रेज किया वो टाटा ट्रस्ट के बारे में. मैं सिर्फ दो चीजें आपको पूछना चाहती हूँ कि टाटा ट्रस्ट इज अ होल्डिंग कंपनी विच इज रन बाय द टाटास. आई हैव ग्रेट प्राइड इन द टाटा ग्रुप बिकॉज दे कम फ्रॉम माई स्टेट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री. JRD Tata was the tallest leader who started Air India, जिनको आप ही सरकार ने, आप ये जो रिजर्वेशन, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज एक तरफ से आप ये जो आप सर आप भी जहां से आते हैं, रोज हम लोग पार्लियामेंट आते हैं, वहां से बड़ा टाटा दिखता है वहां. They have got it. Then एयर इंडिया भी आपने टाटा को दिया. फिर आप टाटा ट्रस्ट को क्वेश्चन करे, पता नहीं किस के बच्चों के हेल्प किया. मुझे किसी के बच्चों के बारे नहीं बोलना अभी, वो जो आपका है वो आप इंक्वायरी कर लीजिए. ऑल द अथॉरिटीज ऑफ यू, उस पर तो मैं बोलूंगी बाद में. बट दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल फॉर मी. देन दे केम टू क्रिप्टो करेंसी. नाउ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, नाउ दिस इज, आई हैव टू आस्क दिस गवर्नमेंट दिस क्वेश्चन. आई वुड my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now, Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके RBI गवर्नर पहले के बीच पे, everybody's view, मेघवाल जी, is कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना. फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं, 500 उस पे टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे. तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है. तो अब तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे. 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा. डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए. आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर. दैट द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो. योर ओनली कमिटी इज सेइंग इट इज बैड. आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे, तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं. मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन. इफ यू से यू आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट. कुछ हार्ड लाइंस लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर. हैव सम स्ट्रेटेजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई.
because we have to save our people who are going through such difficult times. और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में very interesting this government is, cart before the horse it is. There is no data in this government. और उनके I can table it after, I don't want to take the time of the house, but हर सवाल जो जब जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं no data, not that they like data. And even RBI has shown such strong, it's almost, I don't want to use, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुए तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन it's almost sounding, I don't like to use this word for my country which I love, it's sounding like a banana republic. कि समथिंग इज नॉट लीगल, उस पर आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस क्रिप्टो? कौन सा बनाना रिपब्लिक शब्द था, ये रॉबर्ट वाड्रा का शब्द था, आपने कहां से चुरा लिया? नहीं, सीनियर और सौम्य. अदर थिंग विच आई नीड टू टॉक अबाउट, आई नीड द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इज अबाउट टैक्सेशन. नाउ जीएसटी के बारे में गौरव जी बोले, निशिकांत जी बोले, काफी बोला कि वो आपका हमारा था. वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द होल इंटेंशन वाज वेरी गुड ऑफ ब्रिंगिंग द जीएसटी, बट अगेन नाउ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिस ट्रेजरी बेंच इज गिविंग. से आपका बिल हमने लाया एंड देयर इज नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अगर इतना बिल था तो लाया क्यों आपने? एंड सर, वन मोर थिंग विच आई वांट टू ब्रिंग टू दिस हाउस, एंड आई एम हैप्पी भगवत कराट जी, we both come from the state. Bhagwat Karaji, I am ill-informed. Finance is not my strength. So I want to ask you कि एक नया चीज हमारे स्टेट में निकाली है, देश में होती है हमेशा, especially the states which are not of their ideology thinking governments. If you don't have any compliance issue in the GST, then immediately you put the person in jail. Now, is this something, now you in your own finance bill, under errors on page 6, you have brought in so many. इतना देश, इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने इंटेलिजंट लोक वाग, आप भी एरर कर सकते ना. वी आर ह्युमन कराट जी, कधीतरी चूक होते हो माणसाकडून, आपले काय, आपण देव थोडी आहोत. तर जर छोटीशी गलती झाली तर तुम्ही सरळ जेलमध्ये टाकणार त्याला. And was this discussed in the council? Are you trying to tell us all the finance ministers in this country agreed to this? प्लीज क्लैरिफाई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी से गलती हो गई तो बिल में आप फाइनेंस बिल में एरर्स कर सकते हो, लेकिन एक आध आदमी बेचारा गलती हो गया तो गिव हिम टाइम. उसको टाइम दो कि बोला भैया 3 महीने में, 6 महीने में, हफ्ते में कर दो. पर जेल में जो उठा, आजकल तो स्टाइल हमारे राज्य में तो पूछो ही मत, जिसको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं, पूरा नहीं. एंड वन मोर थिंग यू हैव डन in this in this taxation, this is very interesting. I must share this with you. भागवत जी, आपल्याकडे तर जास्तच हे झालेलं आहे की आजकाल निशिकांत जी जिसके बारे में बोल रहे थे, वो पीएमएलए के बारे में बोल रहे थे. आई रिमेंबर, मैं इसी हाउस में थी सर जब वो पीएमएलए के बारे में बोले थे. When he spoke about PMLA, I just 2-3 minutes, I'll just give 2-3 quick clarifications. PMLA के बारे में बोले थे, what he said is happened. It's very, very unfortunate what happened. I'm not going to get into the merits of right or wrong. Who am I to judge anybody? But in the PMLA, this is the same government which has criticized PMLA, has now, sir, you can arrest somebody under the PMLA without a FIR. How can you do that? Please tell me. Even Supreme Court has criticized it. Everybody is asking, कसं तुम्ही माझं काय गुन्हा आहे तर सांगा कराड जी. डायरेक्ट मला काही नाही विचारणार, जेलमध्ये टाकून देणार, म्हणणार आता माझी मर्जी होईल तेव्हा मी FIR करणार. ऐसा थोड़ी होता है सर. दिस इज अ डेमोक्रेसी. You can't put people in jail like this. So all I'm saying, and even the Honorable Supreme Court has raised its issues. I urge this government, you wanted to become an investment place for good investments, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, गौरव जी ने किया, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. सर सब डरते हैं इस देश में अभी. I'm not saying चोरी के खिलाफ मैं हूं, क्यों? If you're cleaning the systems, we will stand behind you in one voice, one vote. मेघवाल जी, I'm telling you, आपके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन ना इंसाफी मत करिए. जो बेचारा मेहनत करता है, उसका एक कंप्लायंस कम ज्यादा हो गया, चलो इसको ठोस दो जेल में. ऐसा नहीं होता. Please, it will one day come back. I don't want to use Nishikant ji's words. I don't wish this for my worst enemy. मैं कभी नहीं सोचती किसी को जेल डालने से किसका भला होता है. उसके घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उसके हाल कभी पूछो, उनकी क्या गलती होती है. और आजकल तो महाराष्ट्र में फैशन हो गया, बीवी बच्चों को भी नोटिस आने लगे. What does that poor wife know? This is really the tragedy of this nation. ब्लैक मनी के बारे में बहुत सारा निशिकांत जी बोले. वेरी गुड, आई एम हैप्पी. ब्लैक मनी आया देश में तो अच्छी बात है. पता नहीं क्या क्या और बोले. डिमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया? क्योंकि आपने कहा ब्लैक मनी आएगा. आई एम आस्किंग कराट जी अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, दैट प्लीज टेल मी how much black money came into the system with demonetization and all these foreign things that you're learning. किती ब्लॅक पैसे आले सांगा. मी आता 15 लाखचा हिशोब पण विचारत नाही. बिचारे अमित शाह जी खरे निघाले. आय रिस्पेक्ट अमित शाह जी फॉर दॅट.
अच्छा बोले उस दिन टीवी पे बोले अरे ये तो जुमला आहे. ऍटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. आय लाईक ऑनेस्ट पीपल. आय रिअली हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. खरं बोलले. काय जाते आपले थोडं ते गुजरात मराठी आपले शेजारी सख्खे शेजारी आहोत आपण. त्यामुळे ते बोलले मी त्याचं स्वागत करते की ठीक है जुमला है छोड़ दिया मैंने कि 15 लाख का हिसाब नहीं मांगूंगी इनसे लेकिन ब्लैक मनी का तो मांग सकती हो ना. इतना हम पे अटॅक करते थे ब्लॅक मनी. कराडजी काय झालं उपयोग काय झाला त्याचा. डिमॉनिटायझेशन मधून किती पैसे आले आणि त्यातून हे ईडी आणि ह्याचं तर काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर. लास्ट पॉइंट सर. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर कि there are people, now this is something really important, last point I promise you, and I want to raise it because it's of serious concern. There are agencies, ED, CBI, if somebody has not done compliance, I'm requesting you that the system has to be followed. Whether PMLA, wo phalana dhikna, jo bhi aapko karna hai karo. But when there is compliance being done, you say that CBI, ED, IT, income tax are very independent bodies. If they are independent bodies, how on Twitter we know who in Maharashtra is going to get raided 3 days, 4 days and 5 days. Ye 15 दिन में जेल जाएगा. Are they astrologers? Who are they? How do they know? मेघवाल जी ट्वीट पे आता है and I can table this. मेरे पास सर के डॉक्यूमेंट्स है. माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. So there are only 2 ways of looking at it. Either then you admit that ED, CBI, all these agencies are run by the people in power today. Admit it. सच बोलो यार. अमित शाह जी सच बोलते हैं. I think I should ask him only. बाकी का पता नहीं. ये सरकार में कौन सच बोलता है कोई नहीं. वो तो जरूर बोलते हैं. और the second question I want to ask, are there leaks? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप. उस अफसर को जेल में डाल देते हैं. जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूं आज, मैं न्याय मांग रही हूं मेघवाल जी आपके सरकार को कि अगर आपका कोई आदमी, आपके 2 ऐसे आदमी हैं, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब सब जानते हैं. कोई नहीं पूछने वाला आपको. कर लीजिए. हमसे गलती होगी फांसी दे दीजिए. यहां भी नहीं विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए. कोई बात नहीं. लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल. तो ये ईडी, सीबीआई, ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर. लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी. कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो पीएमएलए की गलती हो भी गई होगी शायद. थैंक यू बट इट डिड हैंग अस वन डे. तो ऐसा आप मत करिए. थैंक यू. Be fair and be just is my only request. There are some points I wanted, but I appreciate that you will think over all this and make sure this is a safe environment for every Indian who's happy to pay tax for the betterment of this country. Thank you. Thank you. Sir, thank you, sir. Due to lack of time, I am raising some points only. Number one, regarding all members have told here that about the price rise of petroleum products. Sir, my request to the finance minister is to arrest this price rise of petroleum and diesel. Because in all over India, especially the poor people are suffering now because taxi drivers, auto rickshaw drivers, they are not getting passengers in their vehicles. So my request is to arrest this price rise of petroleum and diesel. And another long pending demand to the government is petroleum products should be included in the GST. Sir, I know most of the states are opposing that, but the tax is different in not only in whole India, but in my state Kerala. Sir, my constituency is Vadagara. Between Vadagara and Talisheri, that is the major 2 towns belongs to my constituency. Yeah. From Vadagara to Talisheri is only 13 kilometers. Between that, Mahi. Old Mahi belongs to Pondicherry. New Mahi belongs to Kerala. In old Mahi, petrol and diesel price is less than in Kerala. If 95 rupees for diesel in Kerala, only 85 in Mahi, old Mahi. So my request is if you can include petroleum products to GST, the price rise of petroleum products should be controlled. So this is the most of the political parties also requested that GST, the petroleum product should be included in GST. Sir, number 2, I want to say important things to the finance minister because
Finance Minister told that Calicut Airport is going to be privatized. Sir, in Kerala, there are only 4 international airports: Trivandrum, Kochi, Calicut, and Kannur. Kochi and Kannur are joint venture of state and central. And two airports belong to civil aviation, that is Trivandrum and Calicut. Now Trivandrum has given to Adani. Few days back, Finance Minister told we are also privatizing Calicut Airport. The main problem in Calicut Airport, day before yesterday, Civil Aviation Minister told that a major accident was taken place in Calicut 2 years before. Now the situation is big flights are not coming in Calicut. Calicut is the Hajj embarkation points also. Now, because of the suspended of big air service, now Hajj embarkation point is also suspended. So my request is, so Kerala government is telling that Calicut Airport is going to be privatized. Then why we are acquiring the lands? Civil Aviation Minister told that we want minimum 20 acres for the development of runway. State government is telling that if you are going to privatize the airport, why we are for acquisition land for the airport development. So my request is, please don't privatize Calicut Airport. And till the development work, the Hajj embarkation point should be in Kannur International Airport, because most of the Hajj pilgrims are northern part of Kerala. Now the Hajj embarkation point is in Kochi. They should travel minimum 200 kilometers from Malabar area to Kochi Airport. So till the development work of Calicut, my request is Kannur Airport should be the Hajj embarkation point. Number 3, sir, about this is a common thing, every MPs will join with me, I think. The increasing of MP land fund. Sir, in our fund is only 5 crores. You know, sir, in Kerala, MLAs are getting 6 crores in a year. In Kerala, one parliament constituency means 7 assembly segments. So MLA is getting 6 crores for 1 assembly segment. MPs are getting only 5 crores for 7 assembly segments. And second thing is implementing officers. Sir, you also complained at that. Officials are not giving priority to MP fund. They are giving priority to MLA fund. In my fund also, in 2019-20 fund was not utilizing because I have given suggestion, but officers are not minding for that. Even in review meetings is also not going on. One review meeting held in last week when the parliament session time. So give instruction to collectors to implement MP fund in the proper time. So that is my request. Sir, the third thing is Hindustan Latex in Thiruvananthapuram. That is also going to be privatized. So the state government told that we are ready to take over it. But government is telling that we are not ready. Central government is telling that we are not giving to state government. And the state government is not permitting for disinvestment activities also. So Kerala Chief Minister told the Prime Minister, please allow some state government to participate in the disinvestment process, or it should be shifted to the state of Kerala, because land is given by the state of Kerala for Hindustan Latex. So now it is all going to private sector. So kindly allow state government for this disinvestment process or given it to state government. Sir, another thing is in the railway, senior citizens' right is suspended for the COVID period. Sir, the COVID pandemic is over. Not over, it is partially over. But the right of the senior citizens is not reintroduced. So my request is, please allow senior citizens' right for traveling
in trains. And the last point, sir, I want to mention about the Kerala project. Sir, yesterday, Chief Minister of Kerala met Prime Minister and requested for the sufficient fund from the central government. Sir, yesterday in the Rajya Sabha, Railway Minister told that the total cost, Chief Minister of Kerala told that only 64,000 lakhs for the total cost of Kerala project. But Central Minister yesterday told Rajya Sabha that minimum 1 lakh crores will be the cost of this Kerala project. Sir, it will be a very much burden, not only state, it is also a burden to central government also. And all people are agitating in Kerala state. Day by day, lathi charge are going on. And the Kerala government is putting stone in everywhere in Kerala. So, my request is, please write to the Chief Minister that to stop the putting stone in everywhere in Kerala, or the government should withdraw from the joint venture, because this project is a joint venture. So my request is, please, central government should withdraw the Rail project scheme. And sir, one more thing, yesterday, 2 members from Tamil Nadu, CPI members, they have shown that we want K-Rail. Sir, K-Rail is running from, this project is from Trivandrum to Kasaragod. It is not going to Tamil Nadu. If they want K-Rail, the CPI members from Tamil Nadu, if they want K-Rail, we have no objection. That is none of our business. So my request is, K-Rail project should be cancelled and the central government should withdraw from this joint venture. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. श्रीमती सुनीता दक्कल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। यूनियन बजट 2022-23 में जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दिया है, और उसमें जो हमारा फाइनेंस बिल है इसमें 39 जो हैं अमेंडमेंट्स हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक अभिभाषण में कि कर प्रणाली जितनी सरल होगी, अनुपालन सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। और आप ये देखिए कि अपने बहुत पहले जो है चाणक्य ने भी जो है अपने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें कहा था कि कर हमें इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से मधुमक्खी जो है वो फूल से शहद लेती है, तो उसमें दोनों में किसी को नुकसान नहीं है। दोनों जो है वो बिल्कुल, वो भी अपना शहद जो है ले लेती है और फूल को भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और हमारे करार जी का MOS साहब जो हैं, कि इन्होंने जिस तरीके से जो है वो कर की प्रणाली को सरल भी किया है, और इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें एक गरीब आदमी को अंत्योदय के माध्यम से उसको सब कुछ पहुंचे, उसका जो है लाइफ इजी हो जाए, उस सब के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि पहले कोई समय था कि जिसमें जो टैक्स पेयर है जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हुए डरता था। और आप ये देखिए कि अच्छे भले परिवार का जो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जब ये मालूम पड़ता था कि असेसमेंट के लिए मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, तो वो अपने कपड़े पहले बदलता था, थोड़े फटा पुराना सा कुर्ता पजामा वगैरह पहनता था, चप्पलें ऐसी पहनता था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये ना पता लग जाए कि मैं बहुत रिच हूं। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि आयकर विभाग की जो मेन टैग लाइन है वो है कोष मूलो दंड, कि कोष मतलब धन, मूल रूप से शक्ति है। जो धन जो है वो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो धन है, और धन को किस तरह से एकत्रित किया जाए और उसके बाद किस तरह से आम जनता के लिए उसको लगाया जाए, ये किसी भी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और हमारा जो आज की तारीख में जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में ये भाव है कि हमें जो टैक्स कलेक्ट करना है वो भी बिल्कुल आराम से करना है, और उसके बाद लोगों के अंदर किस तरह से उस चीज को फैलाना है, इस चीज का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर हमारी माननीय सांसद जो हैं शताब्दी जी और सुप्रिया जी, तो इतने
प्यार से, इतने मैं कहूंगी कितने सौम्य तरीके से जो है वो थपकी मारती हैं कि जो है वो सामने वाला इंसान जो है वो ना रो सकता है ना हंस सकता है। बड़ा सभ्य उनका बड़ा सौम्य तरीका है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। वो हमेशा ही जो है अपने मन के गुबार को, अपनी मन की बात को बहुत ही सौम्य तरीके से रखती हैं। तो अगर उनको जो है चिंता है अपने राज्य की, तो क्यों नहीं वो वहां पर जिस तरह से हमारे निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सरल स्वभाव में बताया कि किस किस राज्य में कितना कितना परसेंटेज जो है वो वैट का है, अगर उनको लगता है तो क्यों नहीं वो वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां पर उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वैट को क्यों नहीं कम करते हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दूसरे को जो है कटघरे में खड़ा करना तो बहुत आसान है। अपने पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जो जो अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हमारी आए हैं, जैसे उसमें सेक्शन 68 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं, पहले पिछले की सरकारों में देखिए इस तरह की बातें, इतनी बातें हो चुकी हैं कि जो है हमको उनको दोहराना ही पड़ता है कि पहले कौन किससे, अपने ही किसी साथी से, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बहुत बड़ा उदाहरण जो है उनमें केसेस भी चल रहे हैं। अगर आप इसको बारीकी से अगर आप सोचेंगे कि अपने ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट साथी से लोन लेकर और फिर उसी के इंडस्ट्री में उस लोन को जो है उस पैसे को लगा देना, इस तरह की बहुत सी पहले की सरकारों के अंदर हमने देखी हैं, बहुत से उदाहरण देखे हैं। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई भी गोलमाल ना हो। तो आप ये देखिए कि 60% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर किसी ने कोई पैसा लिया है और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सीधा स्टेट वे उसके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा, ताकि इस तरह की जो पहले जो इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं उसको जो है उसमें बचाव किया जा सके। और इसके बाद आदरणीय सभापति महोदय बहुत सी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में हुई। तो देखिए सरकार की कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले वो धरातल से जो है किसी भी चीज को शुरू करती है। जैसे कि जब जनधन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी तो सबने बहुत इसके बारे में कहा था कि सबके खाते खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें पैसे आने वाले हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस बात की दलील देगा, इस बात को जो है अप्रिशिएट करेगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे गरीब जो हैं, जनता जो है, उनके खातों के अंदर सीधा पैसा पहुंच जाता है। क्योंकि उनके समय में ही उनके ही जो है प्रधानमंत्री, जो उस समय में पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने ये कहा था कि पैसा कितना ऊपर से चलता है और नीचे कितना पहुंचता है। तो ये अभी, और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर से जो है आदरणीय हमारी शताब्दी जी और हमारी सुप्रिया जी के बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने एलपीजी के बारे में बात की। सरकार की जो है वो एक योजना है, सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला योजना के तहत, सभापति महोदय बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा कि जिसके पास गैस का सिलेंडर ना हो और जिसके पास बर्नर ना हो। एक बार ये सिस्टम जिसके पास आ गया, अब आप देखिए कि सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसके तहत जो बायोमास का गैसिफिकेशन है, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद वहां पर 20 ऐसी जगह पर देखे कि जहां पर पहली बार में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो गोबर का लगता है। उसके बाद जो है डेली सिर्फ 2 बास्केट जो है वो गोबर डालने से गैस इतना बढ़िया मिलता है सभापति महोदय कि अगर आप देखें तो हैरान हो जाएंगे कि इतना तो हमारा सिलेंडर से भी उसका फ्लेम नहीं आता, जितना सिलेंडर का फ्लेम, जितना जो फ्लेम है उस गैस से आता है। तो क्यों नहीं ये अपने इलाके में जहां कहीं पर भी आप जब बर्नर मिल गए हैं तो वहां पर बायोमास के लिए, जो बायोमास की गैसिफिकेशन है उसके लिए क्या इन्होंने किया, मैं पूछना चाहती हूं, जरा बताएं। मैंने अपने उसमें बताया कि एक गांव की बात कर रही हूं मैं सिर्फ, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है पूरे इलाके के अंदर फैले, क्योंकि इससे गांव भी साफ होगा और इसके साथ साथ उनको बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला उसके अंदर, सब्सिडाइज सरकार की तरफ से, सभी जो उसके जो छोटी मोटी जो पाइप लगाने का सिस्टम है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो क्यों नहीं वो इस तरह से करते कि एलपीजी उनको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो। तो सभापति महोदय मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, उसी तरीके से ये मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिए हैं, चाहे जनधन योजना का दिया है, चाहे मैंने ये उज्ज्वला योजना का दिया है, तो क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने 1% टीडीएस लगाया। उससे क्या होगा, उससे ट्रैकिंग होगी, जो भी टीडीएस जिसका 1% कट जाएगा ये पता लग जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर 641% इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़े हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको किस तरह से कर्व करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो इतनी दूरंदेशी है कि जरूर इसके बारे में कोई ना कोई बहुत बड़ी सोच लेकर वो इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स, देखिए बहुत बार
पहले क्या होता था कि इसमें सभापति महोदय कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रॉपर टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे आम छोटे जो हैं नागरिक हैं, उनके लिए उनको इतनी दिक्कत आती थी इसमें कि छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, इंटरेस्ट भी लगता था, पेनल्टी भी लग जाती थी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न के 3 साल के अंदर एक टाइम पीरियड दिया है, उसके अंदर अगर कोई भी गलती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक मनी एक्ट है, जो लोकपाल एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको ये सुविधा नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय जो टैक्स में बहुत बार अपील में चले जाते थे, जबकि कोई ऐसा कोई उसके अंदर टेक्निकल इशू नहीं होता था, सिंपली अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट अब जो है उसमें अपील में नहीं जाएगा, इस बात का भी प्रावधान जो है अब की बार के फाइनेंस बिल में रखा गया है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी होता है सभापति महोदय, तो उसमें क्या है कि जो कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हैं वो मार्केट में एक कंपनी बनाकर और उसको कंसोर्टियम करके बोलते हैं उसको, तो उसमें उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज 37% तक हो जाता था। सभापति महोदय इस फाइनेंस बिल के अंदर जो है उसको कैप लगा दी है और अब 15% जो है इससे ज्यादा नहीं होगा और एओपी के लिए 15% जो की कैप लगाकर उसको अब इतना ही जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है उसमें उससे लिया जाएगा। और फेसलेस टैक्स असेसमेंट की मैं बात करूं, हालांकि इसके अंदर शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सेक्शन 144B के अंदर अब जो अमेंडमेंट की है उसके अंदर इसकी ओवरहालिंग की है और इसके अंदर बहुत अब जो इजी हो जाएगा टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करना। और जो पहले तो थोड़ी बहुत एक टीदिंग प्रॉब्लम होती है किसी भी नई स्कीम को लाने में, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। सभापति महोदय इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने देखिए जो कोविड-19 में जिस तरह का वातावरण चारों तरफ रहा और उसमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, तो इसके अंदर वो पेशेंट्स जिनका पेमेंट जो है वो इसके लिए जो है कोविड-19 में जो बीमारी उनको हुई उसकी वजह से जो उनको एक्सपेंसेस करने पड़े, उसके अंदर सरकार की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर उनके परिवार में कोई डेथ होती है और 12 महीने के अंदर अंदर उनको जो पेमेंट मिलती है तो 10 लाख तक की कैप लगाकर उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ जो है फाइनेंस बिल में सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। और एक मैं इसके साथ साथ सभापति महोदय ये कहना चाह रही थी कि ये सब चीजें जो है जैसे कोष मूल्यदंड की मैंने बात की, तो ये कहते हैं कि जो भी हम धन एकत्रित करते हैं गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, तो राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, बोलते हैं कि राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, इसलिए बिना डरे करें इसका सत्कार और बने देश के विकास में भागीदार। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हम बात करें सभापति महोदय, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी अभी कल परसों जो बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब उन्होंने ये बात कही है, भरी सदन में ये बात कही है और उनकी बात जो है हमेशा आपने देखा होगा कि अपनी बात पे पूरा उतरते हैं वो, कि 2024 दिसंबर तक जो है वो हमारा देश जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जो रोड्स हैं हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं, आप देखिए कि, और आप ये देखिए कि जब भी कभी कोई बात होती है कि चाहे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स नेशनल हाईवेज के ऊपर बात कर रहे थे, चाहे हम हेल्थ के ऊपर बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करें, सभी सांसद महोदय खड़े होकर उसी टाइम कहेंगे कि जी हमारे फलाना हाईवे चाहिए, हमें फलानी हमारा एयरपोर्ट लगा दीजिए, हमारे वहां पे रेलवे का। ये सब आएगा कहां से? ये सब कहां से आएगा? इसके लिए जो धन एकत्रित करने की जो बात है तो वो उसी के उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो इस फाइनेंस बिल में है। और इसके साथ साथ आदरणीय सभापति महोदय मैं ये कहना चाहूंगी कि कंक्लूड करो। जी बस बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि पहले की सरकारों में जिस तरह से धन को एकत्रित करने की, खासकर ये मैं कहना चाहूंगी कि ब्लैक मनी जिस तरह से इकट्ठा कर करके बहुत से, और वो आज उस चीज को भुगत भी रहे हैं और मुझे लगता है कि सबको अपने किए का फल जो है वो भुगतना पड़ता है जी, उसमें फिर तिल मिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं अंत में सिर्फ ये बात कह के समाप्त करूंगी कि अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो
धन्यवाद। रोने की जरूरत नहीं होती है। अगर जिसने गलत किया है तो उसको गलत जो है उसका फल भुगतना भी पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हमारी जो मंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस फाइनेंस बिल के लिए और मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। शेयर को भी धन्यवाद देना इतना समय देने के लिए। नेक्स्ट श्री पीवी मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir. And first of all, I would like to congratulate Shri Nirmala Sitaram ji, Karad ji, and the whole finance team for having put up a good effort post-COVID also and during COVID also, sir. This is evident from the fact that the tax buoyancy has improved and the GST collections have gone up substantially. So I think they need a good appreciation for this. Our party appreciates their effort in the country's perspective, sir. Before I go into the national perspective, I would like to talk about the state issues because of the paucity of time. Sir, the first and foremost thing, sir, what was promised to us during bifurcation of the state is Polavaram project. There's huge confusion, sir, for Polavaram project. We have asked hundreds of times. It was clearly written in AP Reorganization Act that Polavaram project will be completed in total and be handed over to the state, sir. And the state had already spent money on that, which was supposed to be taken up as equity. But every day, sir, every day there is some issue or the other and there's some litigation which is coming up from, say if it is not from Jal Shakti, it is from Finance Department. This is not fair. Polavaram project is a national project and was promised to us saying that it will be completed in time. So central government should support us heartfully, sir. We don't need a half-hearted support in this aspect. And I would also like to bring to the notice of the government that Visakhapatnam steel plant is very important. It's something to do with the sentiment of the state. It is not a loss-making venture. This year, we are definitely sure that Visakhapatnam steel plant will make good profit, sir. I've heard like in the replies they're saying that we are going to sell loss-making unit, but there's just 6 or 7 days left for this March month to complete. And I want the ministry also to take a note of this, sir. Because it's going to be profitable and even the years to come, steel industry is looking very bright and it's going to be in profits. We request the government to think of improving Visakhapatnam steel plant by allotting captive mines. And sir, I would like to point out that when BSNL is a loss-making thing, the government should think of privatizing BSNL or things like that which is going to make a loss, but not Visakhapatnam steel plant. And we have seen, sir, recently there have been a lot of students who have returned from Ukraine. The thing is that we are not able to provide them medical education in the country, sir. A lot of people are going there because they're getting cheap education. And the standard is also not bad, sir, what they're providing Ukraine or Philippines. So the state government has taken up a very good initiative. Our Honorable Chief Minister has taken up a very good initiative. He is setting up 13 new medical colleges, sir. They are in various stages of progress. So I request the government to come forward, sir, because there should be a long-term solution. Our students can't go for education outside. We are talking of Atmanirbhar Bharat. But where is Atmanirbhar Bharat in education? Why should our students go out when we have very good teachers, when we have very good staff here? So I request the central government to support these medical colleges in the interest of the nation. And I will also request the government to support for our fishing harbors and the ports, sir. The government will not be at a loss because whatever we transport through these fishing harbors in the small vessels, throughout the country we can transport them. So there are thousands and thousands of trucks which go from Andhra Pradesh, be it fisheries or fisheries product, fish or rice or any other agri products. A lot of things get transported from Andhra Pradesh. But if we make use of these 9 fishing harbors which AP is doing and these ports, new ports which AP is developing, I think a new ecosystem will develop, sir. And the government will get back their revenues in the form of GST. The government should, I request the central government to support these fishing harbors and these ports, sir, because ultimately they are also going to enjoy the revenues and enjoy the tax collections from these ports. And the money will be recovered in a very short span. It makes very good business sense for the central government also. And it will be useful for the public also, sir. So I request the government to support these ports and fishing harbors. And they are dues for AP Civil Supplies Corporation, sir. Right from 2013-14, it is the money which has to be reimbursed for the state. More than 1,700 crores is pending. We request the central government to
come out with all the things, because CAG is already ratified and they are, we are eligible for the reimbursement. So they should immediately do this. And first and foremost thing in the BJP manifesto in 2014 when they went for the elections was a special category status. We were given unviable finances after our state was split. We have the most unviable finances in the country, sir. So we demand special category status. We want the government to keep up its word. And it is not a request, sir. What we have promised, what was promised on the floor is this house. We are demanding a special category status. And even the revenue deficit grant also has not been completely reimbursed. And I have raised issues regarding mango farmers during the discussion, even in the Commerce Ministry. So I would like to bring to the notice of the government, sir. I would like the attention of the Honorable Minister, sir. Sir, there is a discrepancy for mango pulp and mango puree, sir, where GST is being charged at 18% instead of 12%. So it is different, sir. There are farmers in Gujarat, there are farmers in Karnataka, Andhra Pradesh who are dependent on mango. There are people there in Maharashtra, throughout the country, sir. Each state is interpreting in a different way, and now people are being asked to pay retrospective at 18%. So it's going to hit the poor farmers and it's going to kill the industry, sir. This is not a good move. So I request the government to inform the concerned authorities. We will submit a representation of the same also, sir. The farmers should be protected and the tax slab should be at 12%. I will tell you why, sir, because this is just an intermediate process. There is no loss to the government because it is not the final product what they are going to sell it. And there are various other issues also for the farmers, sir. For example, if you are transporting fish with ice, there is no GST. But if you transport cut fruit in ice, adding some salt as preservative, they are charging 5% GST. So this is not fair. So I request the government to sit with the Food Process Association, with the Farmer Association, and sort out all these glitches which is there, because it is something to do with lives of lakhs and lakhs of farmers, sir. Please take this at topmost priority and sort this issue, sir. Sir, I like to proudly tell that all 40,000 government schools in our state are being renovated in Nadu Nedu, sir. They are on par with corporate schools, and the gross enrollment ratio is going up. And I've been asked for recommendation letters for admission into my constituency government schools, sir. They're putting up no admission, there are no admission boards for these schools, sir. So such is the effort our CM is putting in terms of schools. So I would like the central government to support for this program, this novel program, where all the schools are being renovated and all the poor people get a fair chance to get a very good education. So even the other states have announced, sir. Even the UP has announced, Telangana has announced similar lines, what AP is doing. So I request the central government to support this scheme, sir. Without education, the country will not move in the proper education, will not move in the right direction. So, and coming to the other issues, sir, issues where payment is pending from central government, sir. There will be, people are being asked to pay advanced GST even before the realization of the payments. Last time I raised this and they said it's a prerogative of the GST Council. The Honorable Finance Minister, being head of the GST Council, should initiate this and see that without realization of the payment, when people are in stress and government is trying to come up with incentives and support, that too when government is not paying the people, how can GST be collected in advance? So there should be proper justice in this. Only upon the actual realization of the payment, GST should be collected in such cases. I want the Honorable Minister to propose this also. And, sir, in the national perspective, you see the current tax threshold is 2.5 lakhs. It is fixed at 2014. But the inflation has increased a lot, so the poor people will not be benefited. The threshold limit should be indexed to inflation so that the benefit will be there for the basic slab, the bottommost slab, where we don't need to pay the income tax. And all the slabs also need to be rationalized. There are various slabs and it is confusing for the people. And in terms of this faceless assessment and other things, sir, the proposed substitution of section 144B that deals with the procedures around faceless assessment, which was introduced just the previous year, has been amended, sir. And there have been 150 amendments, which is not good, sir. There should be some clarity. There's a lot of confusion. Such
huge amendments is not good for the thing. And, sir, important thing I would like to bring to the notice of the Honorable Minister also is that the decreasing interest rates for various saving schemes, sir. Recently we have seen PF deposits were slashed for 2021-22 from 8.5 to 8.1, sir. After COVID and during the COVID, people have spent a lot of money, sir. Poor people, directly, indirectly, they've spent a lot of their money. They lost their lifetime savings. So I think even the small changes will make a big difference for the poor people. I think the government should step in and come forward and see that it is not reduced. And there are reports that the interest rate on small savings, other small savings schemes might also be lowered, sir, which is not good. So we want the government to intervene and see that the interests don't come down on the savings of poor people. And the one good thing that the government has done by amending Section 115 BBH of the IT Act, they have put tax on cryptocurrency, which is good. Without banning that cryptocurrency, they have put tax. It's a good move. But retrospective tax on anything, even be it cryptocurrency or anything, is not good. So the retrospective tax must be rethought. And relief to startups and manufacturing companies, sir. If you see, the government is continuing the 7% concessional tax rate for till March 24, which is a welcome move. And additionally, even they are doing incentives for startups before March 23, which is also a welcome thing. Sir, we want proper utilization of the Startup India scheme, where only 37.46% of the funds was used and only a meager 50 crores has been allotted. This is a very good scheme for encouraging entrepreneurs. So I think the government should make sure that more people get benefited of the scheme and remove the glitches, because we are not even able to spend what was allotted, and very small amount has been allotted, only 50 crores, 2 minutes. Sir, if you see the most important thing, sir, we are talking of a cooperative federalism and Sabka Saath, Sabka Vikas. But if you see the total gross tax revenue collected is 27.5 trillion, sir. In that, the states are getting only 8.1 trillion. And if you see what the Finance Committee has recommended, they have recommended 41%, sir. But actually, if you see, there is 18% surcharges and cesses which is being doing. And states are getting only 29%, which is not fair, sir. So government should, in the true spirit of cooperative federalism, they should help the states. It is, when the government central government is saying Sabka Saath, Sabka Vikas. Now it is like Sabka Saath, Center Ka Vikas, sir. It should be, states also should be treated fairly. They should get their funds. And in the end, sir, I would like to again reiterate that AP Reorganization Act, lot of issues have been pending in the AP Reorganization Act. I want the central government to, central ministers and central government to step forward and sort out the issues for Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Pinaki Mishra ji. Thank you, Mr. Chairman, sir, for calling upon me on behalf of the Biju Janata Dal to speak on the tax and non-tax proposals in the finance bill of 2022-23. First, the tax proposals in the finance bill. Mr. Chairman, sir, it's a matter of dismay, I think, if not alarm, for all of India to have seen what we did during the UP elections when income tax raids took place in Kanpur, and we found piles and piles of cash. It took the income tax department some 5 days to count the cash. And even then, I think there were no figures that were matching. At some point, it was 180 crores. At some point, 230 crores, 235 crores. This is a mountain of cash which is floating around in our economy. The Honorable Prime Minister, in a lightning strike on the 8th of November 2016, called for demonetization. The objectives of demonetization were removal of black money and bringing in a digital economy, was to do away with fake currency, was to curb terrorist financing. My Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik ji,
believing in the Prime Minister's noble objectives, was one of the first Chief Ministers to come out openly in support of demonetization. I think the Prime Minister's dream and his vision has been belied. I think the Treasury benches, which are unfortunately empty as I speak today, will be the first to understand and recognize that the Prime Minister's vision has been completely belied. Not only did the 16 lakh crores then, which were demonetized, come back in its entirety. Supriya Suleji asked a question. I'd like to ask the government how much black money came back. Oh, all the black money came back. Nicely laundered, cleaned up, washed up, laundered. So all the black money came back. In fact, my memory serves me right, some 30,000 crore more than the issued currency also came back. So which means 30,000 fake currency also came back into the government system. And the government is still silent on how much tax they managed to actually get back from the laundered money. I don't think that's, because they are saying it's all wrapped up in litigation. I'm sure it will be wrapped up in litigation for the next 20 years. What is the position today? It was 16 lakh crores of cash money in circulation in 2016. Today it has gone up to 29 lakh crores. It's almost doubled. This is the position today with regard to cash currency in circulation. Somewhere, this government has to acknowledge that it has been no different than the Congress government of the 60s, 70s, 80s, because of which there is a legacy of black money in this country. Because in those days, I remember when I was a child, I used to be told my father was in the Swatantra Party, which always asked for liberal tax policies against the Congress's so-called Fabian socialism. My father used to tell us that the tax slab at one time in India was 110%. If you earned 100 rupees, you paid 110 rupees in tax. This was the tax slab, with income tax, wealth tax, all other surcharges included. Which is what has given rise to black money in this country, which is what has given rise to aversion to paying tax in this country. And no matter what Mrs. Dugal, who is herself from the department and therefore has a much rosier picture about the department than most of us have, Mrs. Dugal said the department has now become much more user-friendly, able-friendly, etc., etc. I don't think anything of that sort has happened. We are still in a country of 130 plus crores. There are only 2.5 crore tax assessees. And tax assessees are not taxpayers. The taxpayers, I think, are barely run into some 25 odd lakhs. The rest file nil returns. So they are actually not taxpayers. They are only for the namesake, they are tax assessees. So taxpayers, therefore, out of 130 crores is 25 lakh direct taxes. And out of that, only 8,000, regrettably, are over the figure of 5 crores a year. Out of that 8,000, let me tell you that 2,500 are lawyers and chartered accountants. So, therefore, we are proud to be part of that 8,000. But the point is, that figure of 8,000 in this country of 130 crores, looking to the mountain of cash in circulation, that figure of 8,000 should actually be no less than 80,000, if not 8 lakhs, honestly, if we look at the honest truth. So therefore, something is seriously still wrong with our tax compliance, because something is seriously still wrong with the method of tax collection in this country. The government must be the first to come to terms with it, and I'm sure the Prime Minister, who wants to change all that was wrong with the Congress, and much was wrong with what the Congress did for 60, 70 years in this country, if he wishes to actually clean the system out, he has to start right at the bottom. There is an army of tax collectors out there which is not necessary. You don't have to give them jobs and pensions. They are there only to get jobs and pensions. That army can be whittled down to 25% of what it is today. If you simplify your tax procedures, you make out two clear slabs of 15%, 20%, no exemptions, 15% below a particular threshold, 20% above a particular threshold. You don't need 10,000 exemptions, and therefore 5.5 lakh people to adjudicate on a daily basis.
And we know what happens. All this faceless assessment and all, Mr. Chairman, I've been a taxpayer for the last 37 years. So therefore, people who actually pay those taxes know what the actual position is. So all this faceless assessment, etc., is complete hogwash. And I'm saying this on the floor of the House. That's as far as taxation is concerned. Therefore, it's a matter of regret that the government has actually done very little to ensure that black money is weeded out of the system, number one. Number two, I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency, that cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the Standing Committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen, he has gone on record to say this is just hot air. So therefore there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air. And the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher than equity gains, because it is some kind of sin. The 1% TDS, again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are, again, it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately, as far as this is concerned. I know I don't have too much time, so therefore I would urge the government, that bill is already 1 year old, is pending. We in the Finance Standing Committee were expecting this bill to be brought to the committee last August or September. That's what we were told. It's still not ready, which means the mandarins of the Finance Ministry are totally at 6s and 7s. Therefore, I would suggest, get a proper task force with professionals involved who will draft this, because otherwise this bill is going to be a disaster. And like the IBC, which has now been, or the Companies Act, which has now been amended 8 times in 6 years, this is just going to keep having to be amended. Mr. Chairman, sir, on the non-tax proposal side, just a couple of very quick things. We welcome the disinvestment of Air India at 51,000 crores. This was long overdue, one of the boldest steps of this government. I congratulate the government. But I think the government again has fallen short by not being bold enough to go ahead and disinvest all the other white elephants that the government is holding on to. There is no reason why the government, which has such a brute majority and such extraordinary goodwill, which has been shown in the last 5 set of elections. In 4 they've swept. They've got great goodwill. So there is no reason why they can't encash this goodwill and go right ahead and do what they had to do by way of disinvestment. That's one of the real disappointments of this government. Therefore, they need to seriously rethink their disinvestment policy. And the Prime Minister on day one had talked about land monetization, which is again one of the critical areas of the Indian economy, which is again languished completely in the times of the Congress 60, 70 years. On the contrary, the maximum amount of land encroachment has taken place during Congress times, and I think it has been actively supported by their local leaders. So therefore, if to prevent further encroachment, Mr. Chairman, I request the government that the government must aggressively come out with a land monetization policy. Needless to say, my time is up, so I'm not going to waste the time of the House in trying to beseech you to give me more time. All I'm going to say is, while we support the finance bill, the objectives being noble,
need to be far sharper in their focus and far sharper and far sharper in their execution. Thank you, Mr. Chairman, sir. Thank you, Pinaki Mishra ji. Next is Kausalendra Kumar ji. करने के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ व्यय का बजट प्रस्तुत किया है। यह काफी सराहनीय एवं विकास की रफ्तार को बनाए रखने वाला बजट है। जैसा उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 9.2% रहने की अनुमान है। यह कोरोना काल को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व की परिणाम है। देश और यूं कहें कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पिछले 2 साल से त्रस्त है। यह तो टीकाकरण की सफलता का परिणाम है कि हम लोग तीसरी लहर को क्षति को कम करने में सफल रहे हैं, नहीं तो दूसरी लहर को कल्पना मात्र से ही भयावह स्थिति के बारे में एहसास होने लगता है। इस महामारी ने हमारे जीवन के रहन सहन को ही बदल रखा है। सरकार भी सजग है। आज सुदूर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। आज करीब सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, वेंटिलेटर एवं आईसीयू की व्यवस्था हो चुकी है। सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही संभव हुआ है, किंतु प्रथम लहर में हमारे मजदूर भाइयों को जो परेशानियां हुई वह पीड़ादायक था। आज बेरोजगारी एक अहम समस्या खड़ी हो चुकी है। लगभग 45% युवाओं की आबादी है, वे बेरोजगार भटक रहे हैं। महामारी में जिनको रोजगार मिला हुआ था वह भी बेरोजगार हो गए हैं। इस घड़ी में गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर राहत का काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति में 7 क्षेत्रों में एक साथ क्लब कर सतत विकास की गति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे अधिक नौकरियां पैदा होगी। आशा है इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। बिहार में भी कोसी मुची नदी को जोड़ने का प्रस्ताव लंबित है। दूसरी बागमती, बूढ़ी गंडक और नून नदी एवं गंगा और बागमती नदी को जोड़ने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास लंबित है। इसे भी लागू करना चाहिए। बिहार का 73% भूभाग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में। कोसी और गंडक नदी पर नेपाल के मुहाने पर हवाई डैम बना दिया जाए तो बाढ़ से राहत मिलेगा। साथ ही गंगा नदी में गाद सिल्टिंग की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे। महंगाई की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। आम लोग इस महंगाई से परेशान और त्रस्त हैं। चाहे पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जनता तक पहुंच बाहर हो गई है। बिहार में एवं अन्य कुछ राज्य की विकसित दौर में काफी पिछड़ रहे हैं। यह तो सरकार की नीतियां आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे रेड्डी साहब बता रहे थे। तो उसी प्रकार से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार बिहार के सांसद और जनप्रतिनिधि हर पार्टी के लोग बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खास करके लॉन्ग टर्म अगर विकास नहीं होता है बिहार में तो उसके लिए काफी परेशानी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकास दर को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो केंद्रीय करों में छूट मिलता है उसका लाभ बिहार को भी मिले और औद्योगिकीकरण भी हो, रोजगार का भी अवसर पैदा होगा। इससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
सभापति महोदय, सरकार 2022 में किसानों की आय दुगुना करने का वायदा कर चुकी है। यह पूरा होना चाहिए। देश में किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारा अन्नदाता खुशहाल रहे। किसानों को अधिक कैश प्राप्त हो, इसके लिए पशुपालन चाहे मछली पालन, मुर्गा पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उसके फल सब्जी के लिए जगह जगह कोल्ड स्टोरेज चैन होना आवश्यक है। तिलहन और दलहन की खेती पर अधिक प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जो सांसदों के द्वारा चुना गया है वो विकास से परे है। उसके लिए कोई आवंटन नहीं है, न कोई फंड उसके लिए है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद ग्राम योजना को विकास के लिए कोई अलग से इसके लिए फंडिंग करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी का 80 लाख पक्के आवास की घोषणा सराहनीय कदम है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन का कार्य योजना भी लाभदायक होगा। महोदय, सरकार पुराने गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए अधिक सब्सिडी देने पर विचार करे। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। रेलवे कोरोना काल से जो बंद हुआ है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना काल का ही स्पेशल ट्रेनें चला करके काफी पैसा ग्रामीणों से वसूला जा रहा है। और जो स्पेशल ट्रेन होल्ड पर रुकती थी, जो लोकल ट्रेन थी, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। इससे काफी आम लोगों में परेशानी है। इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। बिहार में रेलवे की ECR जोन में करीब 57 नई परियोजनाएं चल रही है, परंतु आवंटन 6,606 करोड़ हुआ है। इससे रेल परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होगी। मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और बौद्ध सर्किट से भी जुटा हुआ है। लगातार हम लोग प्रयास मांग करते रहे हैं कि बौद्ध सर्किट से जुटा हुआ है, जबकि कुशीनगर, बनारस, गया बुद्ध सर्किट में हवाई योजना उड़ान शुरू हो गया है, लेकिन नालंदा में अभी तक हवाई अड्डे का कोई कार्यक्रम नहीं चला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिया जाए। भारतमाला के तहत NH परियोजनाओं में जो भी NH एवं एक्सप्रेसवे बिहार को आवंटित हुआ है, उस पर तेज गति से कार्य पूरा किया जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती अभिरूपा पोता जी। Thank you, Speaker sir, for allowing me. Thank you, sir, for Chairman sir, for giving me an opportunity to speak in the finance bill, sir. Sir, we are slowly coming down from the coronavirus pandemic, and everyone was anticipating in this budget and finance bill to be a booster dose of the economy in the post-pandemic era. But in reality, the booster dose, what means is only for the rich, and the poor and the middle class are only getting a booster dose of high taxation, increasing fuel price, and rising inequality. So the government talks about increasing GDP. I feel it means increasing in gas, diesel, and petrol. I would point out few announcements that have been made through finance bill. The budget seeks to lay the foundation of achieving a vision of Honorable Prime Minister for India, also making India a preferred choice for world of doing business. The government has been shifted the goalpost. For first we speak that it said in 2022 it will double the farmers' income, house for all in 2022, and 5 trillion economy. I would want to know from the minister whether this target has been achieved or not. If it has been achieved, please do give us the data or the note of all this. Sir, the finance minister has not proposed any change in basic tax rates and maintained status quo for all types of assessees based the last year. However, it is proposed to extend surcharge 15% of any long-term capital gain earned by individual and half
which is currently applicable only to the capital gain on listed shares and dividend income, whereas minimum surcharge for balance income was only 37%. Sir, there has been a demand for clarity on admissible of input tax credit for expense incurred towards CSR activities as well as expense incurred in wake of COVID-19. Since such supplies have been procured in course of business and mandatory law, industry that availment of ITC and of GST charge on such supplies should not be disputed. Sir, there has been a delay in processing of GST refunds, where the timeline is for 60 days, within which refund amount must be disbursed under various categories, leading to working capital crunch to businesses. In view of same, the government may consider granting provisional refund to extent of 90% of the total claim within 7 days filing such refund claim, sir. Sir, the textile industry, where the government has deferred increase in GST rate, the textile industry is facing several challenges, especially in rising price of cotton in international commodity market. The key player in this sector have urged the government to remove the 5% import duty on raw cotton. This move will help to stabilize the cost and import such which will give support to the big and the small businessmen. Similarly, there is a specific sectoral expectation on overall rationalization of customer duty rates, especially on raw material in key sectors like steel, aluminium, etc., to check input and cost of inflation. On other side, certain sectors like pulp, paper, seeking imposition of import duties on specific sourcing material to create level playing fields and protect domestic industry and further make them globally competitive. Sir, in this budget, we have not seen that how much money, black money have come due to demonetization. People, sir, भारत का जनता बैंक के लाइनों में खड़ा रहा, लेकिन आज तक इस देश में कितने ब्लैक मनी इस देश में वापस आया और 100 से अधिक पब्लिक बैंक के लाइनों में जब खड़े थे तो वो डेथ कर गए, उसका वो लोग कितने वापस आए, काला धन वापस आया, इस चीज का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, ये भी हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि सर, देयर इज अ नो रोड मैप ऑफ employment for the unemployed youth of this country. लेकिन इस देश के कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर आप शिक्षित हो तो आपके पास नौकरी नहीं है तो आप पकोड़े तलो, चाय का दुकान खोलो, ये भी सही बात नहीं है। और सर, आप अपने वक्त में बोलिएगा। और सर, जो हाई प्राइस ऑफ फ्यूल के वजह से हर चीज का कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली विषय है। और चौथा पॉइंट मैं अपना बोल के बात रखूंगी। सर, जब कोरोना के टाइम में अचानक लॉकडाउन के वजह से इस दिल्ली से काफी प्रदेशों में वापस जब माइग्रेंट वापस घर गए थे तो जो लोग रास्ते में ही डेथ किए, उसमें से कहीं देखा गया कि जो मेन अर्निंग पर्सन थे वही लोग डेथ कर गए। लेकिन उन परिवारों के साथ क्या होगा, उन परिवारों को कोई हेल्प किया जाएगा कि नहीं, इस विषय में भी इस फाइनेंस बिल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। यही बात बोल के मैं अपना बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री के सुरेश। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity to participate in the debate on Finance Bill 2022-23. Without any further delay, I am moving the pertinent issue that I would wish to raise. Sir, I am speaking exclusively for the marginalized people. I am not going to all other details, but I am particularly specific issues for relating to scheduled castes and scheduled tribes and other backward communities. As in the case any budget or state and sectoral allocation made, the scheduled castes and scheduled tribes are
the most affected and least allocated. Sir, in the Union Budget 2022-23, the allocation of scheduled cost stands rupees 1,42,342.36 crores and 89,265.12 crore for the scheduled tribes. 329 schemes for SC and 336 schemes for ST have been allocated for the welfare of scheduled caste and allocation for welfare of scheduled tribes respectively. While the allocation appears large and generous, the proportion of targeted schemes is 37.79% within rupees 5,37,900 crore allocated for targeted scheme under SC budget, within 43.8% with the rupees 39.113 crores for STs. This is the disparity of these marginalized people, sir. Sir, Honorable Chairman, sir, you are very much aware of that. The marginalized people, scheduled caste, scheduled tribe, what is their living condition? Inflation is going every day, and also essential commodity is inflation, price hike is also going in a drastic level. And also, sir, the employment opportunity also decreasing. Who is the ultimate victim of this country? The government policies and also government various government policies. Who is the victim of this country, sir? We are not realizing. Ultimately, the victims are scheduled castes, scheduled and other vulnerable people. Sir, the rest of the schemes under Dalit and Adivasi budget are de facto general schemes. With the mask of SC or ST budget scheme, they do not qualify as SC/ST schemes that will be benefit communities. Considering the general nature of the schemes, these will not address the development gap between SC and ST, rest of the population as mandated by the guideline. The government has been voicing the need of the development of the Dalit and Adivasi community. However, the same is not reflected in the budget financial year 2022-23, sir. Sir, let me explain the same SC and ST wise. Budget for scheduled caste and for scheduled tribe 2022-23 in rupees crore. Total expenditure budget estimate 22-23 is SC for 4,361 crores, ST 4,444.361 crore. As per total expenditure through budget and resource of public enterprises, as per statement expenditure profile financial year 2022-23. Total eligible central sector scheme and centrally sponsored scheme for SC, STs, 1,230.836 crores and STs 1,226.82 crores. Due to allocation for scheduled caste and scheduled tribes, as per the new guideline of Niti Aayog, is rupees 182,976 crores for SC and 98,664 crores for STs. Allocation for SC schemes as per statement 10A and ST scheme as per statement 10B is rupees 1,42,340 crores SC and 89.265 crores STs. Therefore, the total gap in allocation is rupees 129.18 crores for SCs and rupees 50 lakhs 0.77 crores for STs. This has always been the case of the last 7 years. Not only this year, not only last year, last 7 years, despite giving the high figures, there has been no actual and sincere allocation in any successive budget. Apart from the
budget discrimination. The government is extending its humiliating stance on rejecting the Dalits in every walk of life. Sir, available data shows there is a total number of atrocities on Dalit women, about 7,000 crimes, with about 10 Dalit women raped on every average daily. Sir, however, the budget allocation in this year only 600 crores for the effective implementation of SC/ST POA Act, out of which about 180 crores to address violence and crimes against Dalit women. Sir, the trans-Dalit community do not find mention in the budget, and this is totally invisibilized without having any allocation. Sir, the discrimination of allocation for post-matric scholarship, very important, sir. Sir, the post-matric scholarship in this country for SC/ST is very important. Yes. The commitment of allocate 7,000 crores for post-matric scholarship has not been fulfilled this year too. This year, there is an allocation for only 566 crores for SCs and 1,965 crores for STs. So it is abundantly clear that the government is doing whitewash of allocation, that any actual concerned spending of the country's most challenged and discriminated section of the society. Sir, this is the all over the scenario of the scheduled caste and scheduled tribes in this country, sir. So nobody is listening to scheduled caste and scheduled tribes problem. Their living condition is not addressing. Their employment is every day decreasing. But government of India is not addressing these marginalized people. That's why I am fully mentioning the. Sir, I am concluding, sir. Sir, in my state, also you are also very much aware. I would like to request Honorable Finance Minister regarding the K-Rail project in Kerala, which is a highly objectionable project from Kerala. Large-scale agitation is going on. So I would like to request Honorable Finance Minister, the Kerala's economic crisis is going to be far worse and serious than Venezuela and Sri Lanka, as mindless data taking without any investment or creating employment avenues for its vast number of unemployed youth, inviting foreign direct investment. The present rate of debt in Kerala reaching 3.27 lakh crores, and debt constitutes 37.3% of the GSDP, and debt to rate of revenue ratio 2020-21 and 2019-20 at 380 and 290 respectively. The debit to states' own revenue ratio for 2020-21 and 19-20 and at 362 and 490 indicates that Kerala is a bad debit category. During 2019-20, Kerala spent 75.6% of the borrowed money for revenue expenditure, which means that the state is not in a position to. Please conclude. I am concluding. State is not in a position to service the debit or take any other loan any soon. In this financial crisis, the government of Kerala is pushing ahead of Silver Line project that is based on the fake and manipulated DPR, making the total cost of 63,000 crores. This figure has been exposed by several experts, including Metroman Sridharan, who stated that even Nidhi Ayog also mentioned that security wall, this cost will be going up to 1,25,000 crores. So I would like to request Honorable Chairman, through you, sir, Honorable Finance Ministry, kindly see this Kerala government Silver Line DPR and not allowed to any financial sanction for this project. If you are giving the financial sanction for this project, the entire Kerala will be totally demolished. So therefore, I would like to request to the government through you, sir, Honorable Finance Minister also, this project, Silver Line project, to not given any financial sanction. This is what my humble request. Honorable Finance Minister is also here. She is very much aware of that. We are also 19 MPs
Kerala MP signed a memorandum to you, to ma'am. Ma'am, 1 second, ma'am. Silver line. Ma'am, 19 MPs from Lok Sabha, Rajya Sabha signed a memorandum and submit to you, ma'am. You are very much aware of the Silver Line project. So Chief Minister is told in the media yesterday also, and in Kerala, in Delhi also, the Railway Ministry has given a principle agree, and Finance Ministry has given permission, and also Nidhi Ayog also given permission for Silver Line. We don't know. We are the members of Parliament. We don't know whether the government of India has given final sanction for Silver Line. The Finance Ministry has given sanction for Silver Line. We don't know, but the Chief Minister has already declared that, and also ministers also declared that. Survey is going on. The eviction action is going on. You will clear it in your reply speech. Kindly clear it. Thank you, ma'am. Thank you. அவை தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா விவாதத்தின் மீது பங்கேற்று எனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். சமூக நீதிக்கென ஒரு அமைச்சகம் இயங்குவது பாராட்டுதலுக்குரியது, மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் அந்த துறைக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது. கடந்த 2021-2022 நிதியாண்டுக்கு சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்ஸ் என்கிற மிக முக்கியமான திட்டங்களுக்கு 1395 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த 2022-23 நிதியாண்டுக்கு அது 969.50 கோடியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லப்போனால் வேறு எந்த துறையையும் விட இந்த துறைக்கு கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த துறை என்பது சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள விளிம்பு நிலை சமூகங்களை மேம்படுத்துவதற்கென்றே இயங்குகிற ஒரு துறை. ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ், ஓபிசி, மைனாரிட்டிஸ், டீநோட்டிஃபைட், டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்ட், விமன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த சமூகங்கள் தான் விளிம்பு நிலை சமூகங்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். இதனை சமூக நீதி சமூகங்கள் என்று அழைத்தாலும் பொருந்தும். இவர்களை கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் ஆகிய தளங்களில் மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த துறை இயங்குகிறது. ஆகவே சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கியுள்ள, அதிகார வலிமை குன்றியுள்ள இந்த பிரிவினரை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த அரசு செயல்படுமேயானால் இந்த நிதி குறைப்பை செய்திருக்காது. இவ்வளவு பெரிய அளவில் ஏறத்தாழ 400 கோடிக்கு மேல் வரும் நிதியாண்டிற்கு நிதியை குறைத்திருப்பது ஏன் என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விளக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக ஸ்மைல், சப்போர்ட் ஃபார் மார்ஜினலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் லைவ்லிஹுட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ், சீட் ஸ்கீம் ஃபார் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்டி, என்டி, எஸ்என்டிஸ், அதேபோல பிரதான் மந்திரி தக்ஷதா और குஷால்டா சாம்பன் ஹிட் ரஹி யோஜனா, இந்த திட்டங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நிதி குறைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிதி குறைப்பை கைவிட்டு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நான் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த துறையில் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜஸ், சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய தம்பதியினருக்கு ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வகையில், அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில், பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் நலிவடைந்து விடக் கூடாது என்று மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் இதுவரையில் ஊக்கத்தொகை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த தொகை நிறுத்தப்பட்டிருப்பது கவலை அளிக்கிறது. எனவே அதை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு உதவித்தொகையை வழங்க முன்வர வேண்டும். அந்த உதவித்தொகையையும் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதேபோல அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்பு உருவாக்கப்பெற்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் எழுத்தும் பேச்சும் தொகுக்கப்பெற்று இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் வெளியீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அண்மை காலமாக அது முற்றிலும் செயலிழந்து கிடக்கிறது. அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் மூடப்பட வேண்டும் என்று இந்த அரசு நினைக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஏன் இந்த அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்புக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் முடக்கி வைத்திருக்கிறது? அம்பேத்கரை ஒருபுறம் கொண்டாடிக்கொண்டே, அவர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதிக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே, அவருடைய பிறந்த நாளை
கொண்டாடிக்கொண்டே, அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை கொண்டாடிக்கொண்டே, ஆனால் அவர் பெயரில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற அம்பேத்கர் பவுண்டேஷனை செயல்பட விடாமல் முடக்குவது எந்த அடிப்படையில், எந்த உள்நோக்கத்தில் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அம்பேத்கர் பவுண்டேஷனுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். அவருடைய எழுத்துக்கள், பேச்சுக்கள், சிந்தனைகள் ஆகிய அனைத்தையும் இந்திய மொழிகள் யாவற்றிலும் மொழியாக்கம் செய்து மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். உண்மையிலேயே சமூக நீதியை மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமானால் அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் இயங்க வேண்டும். அதற்கு போதிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டுமில்லாமல் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்த நாளை தேசிய விடுமுறை நாளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒரு வேண்டுகோளாக விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அயலக பல்கலைக்கழகங்களில் சென்று படிக்கிற இந்திய மாணவர்கள் பெரும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிற உதவித்தொகை போதுமானதாக இல்லை. வெறும் 100 மாணவர்கள் என்று இருந்த நிலையை இப்போது 125 மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து அயல் நாடுகளுக்கு சென்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாணவ சமூகத்தில் இருந்து எழுந்துள்ள கோரிக்கை என்பது ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 20,000 மாணவர்களுக்காவது இந்த உதவித்தொகை கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். நான் இந்த அவையில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ஆண்டுக்கு 2,000 மாணவர்களுக்காவது இந்த உதவித்தொகை கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப், அந்த உதவித்தொகையில் தான் SC ST மாணவர்கள் எல்லா மாநிலங்களிலும் பயின்று வருகிறார்கள். அந்த உதவித்தொகை 6 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த தொகை 35,000 கோடி என்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அந்த நிதி ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் எவ்வளவு என்று வரையறுக்கப்படவில்லை, ஒதுக்கப்படவில்லை. அது ஒரு ஏமாற்று நடவடிக்கை என்பதை போன்ற தோற்றத்தை தருகிறது. எனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் எவ்வளவு என்பதை தீர்மானித்து மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும், மாணவர்கள் பயன்பெற ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ டி ரவிக்குமார். மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களே, 15வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வை நிர்ணயிக்கும் போது கூடுதலாக நிர்ணயித்திருக்கிறது என்ற ஒரு பேச்சு எழுந்து எல்லோரும் வரவேற்றோம். ஆனால் உண்மையிலே மாநிலங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற நிதி பகிர்வானது 30 விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக இருக்கிறது என்பதை புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. இதனால் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் மிகப்பெரிய நிதி சுமையிலே இன்றைக்கு சிக்கி தவிக்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே 15வது நிதிக்குழு நிர்ணயித்த அளவுக்கு நிதி பகிர்வை மாநிலங்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் செஸ் சர்ச்சார்ஜ் என்று கூடுதல் வரிகளை விதித்து அந்த நிதியை முழுவதையும் ஒன்றிய அரசே எடுத்துக்கொள்கிறது. அதிலே மாநிலங்களுக்கு எந்த பங்கும் அளிக்கப்படுவதில்லை. இது மிகப்பெரிய ஏமாற்று தந்திரமாக இருக்கிறது. எனவே இந்த கூடுதல் வரிகளிலும், செஸ் சர்ச்சார்ஜ் போன்ற கூடுதல் வரிகளிலும் மாநிலங்களுக்கு பங்களிக்க முன்வர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு GST அந்த காம்பன்சேஷன் என்பது 2022ஆம் ஆண்டோடு நிறைவாகிறது. அதற்கு பிறகு மாநிலங்களுக்கு GST காம்பன்சேஷன் வழங்கப்படாது என்று ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மாநிலங்கள் GST காம்பன்சேஷன் இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடியை சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எனவே GST காம்பன்சேஷனை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வங்கி ஊழியர்களுடைய பிரதிநிதிகளை சந்தித்து பேசுகிற நேரத்தில் ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர்களுக்கு பென்ஷன் தொகையை உயர்த்தி தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று தெரிவித்தார்கள். IBAவுக்கும் அதற்கான ஆலோசனைகளை தந்தார்கள். ஆனால் கடந்த 30-40 ஆண்டுகளாக ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர்களுடைய ஓய்வூதியம் என்பது மாற்றப்படாமலேயே அப்படியே இருக்கிறது. இதனால் பல லட்சக்கணக்கான வங்கி ஓய்வூதியதாரர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் வாக்களித்தவாறு அந்த ஓய்வூதிய தொகையை உயர்த்தி தருவதற்கு IBAவுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாற்றுத்திறனாளிகள், டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்,
அவர்களுக்காக பல திட்டங்களை நமது அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் பென்ஷன் வழங்குகிற ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. மாதம் 300 ரூபாய் என்று அந்த பென்ஷன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களிலே கூடுதலாக மாநில அரசுகள் தங்கள் நிதியிலிருந்து அந்த பென்ஷன் தொகையை உயர்த்தி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பென்ஷன் தொகை பல ஆண்டுகளாக ரிவ்யூ செய்யப்படாமல் மாற்றியமைக்கப்படாமல் இருக்கிறது. எனவே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிற பென்ஷன் தொகையை குறைந்தபட்சம் 3000 ரூபாயாக நிர்ணயிப்பதற்கு அந்த துறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள், கிளட்சஸ், வீல் சேர்ஸ், அதுபோல ஊன்றுகோல்கள், இத்தகைய உபகரணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கூடுதலாக ஜிஎஸ்டி அதிகபட்சமாக 12% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. இது மாற்றுத்திறனாளிகளை மிக மிக மோசமாக பாதிக்கிறது. எனவே மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுக்கான ஜிஎஸ்டியை முற்றாக விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்களை பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக எஸ்சி/எஸ்டி மக்கள் அவர்களுடைய நிலையை பற்றி இங்கே பேசிய உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அவர்களுடைய பிரச்சனை என்பது அவர்களுக்கு நிலவுடைமை இல்லாததால் ஏற்படுகிற பிரச்சனையாக இன்றைக்கு கிராமப்புறங்களிலே இருக்கிறது. கிராமப்புறங்களிலே வாழ்கிற எஸ்சி/எஸ்டி மக்களிலே 17% பேருக்குத்தான் நிலம் இருக்கிறது என்று NSSOவின் அந்த ஆய்வறிக்கையிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. நிலமற்ற ஒரு நிலையும் அவர்கள் மீது ஏவப்படுகிற வன்கொடுமைகளுக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருக்கிறது. அட்ராசிட்டிஸுக்கும் லேண்ட்லெஸ்னஸுக்கும் நேரடியான ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் மீதான அட்ராசிட்டிஸ் வன்கொடுமைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால், குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு நிலம் வழங்குவதற்கான திட்டத்தை நம்முடைய அரசு உருவாக்க வேண்டும். புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் இறக்கும் தருவாயில் இந்த அரசுக்கு, அன்றைக்கு இருந்த அரசுக்கு விடுத்த வேண்டுகோள் அது. இந்த மக்களுக்கு, கிராமப்புறங்களிலே வாழ்கிற எஸ்சி/எஸ்டி மக்களுக்கு இந்த அரசு பரிவோடு அவர்களுக்கு நிலம் வழங்குவதற்கு, உபரி நிலங்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றன. இதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு KR நாராயணன் அவர்கள் ஆளுநர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழு தன்னுடைய அறிக்கையை 2008ஆம் ஆண்டு ஒன்றிய அரசிடம் சமர்ப்பித்திருக்கிறது. அதிலே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் எவ்வளவு உபரி நிலங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றை எப்படி எஸ்சி/எஸ்டி மக்களுக்கு வழங்கலாம் என்று அதில் வழிகாட்டுதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்த அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டு அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Shri N.K. Premchandran. Thank you, Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Finance Bill of 2022. Sir, I would like to appreciate the Honorable Finance Minister in presenting a non-controversial finance bill after a long time. Sir, it is a moderate bill, though the policies and programs of this government is pro-corporate. This finance bill of 2022 is moderate. It is a well-balanced finance bill. So once again, I take this opportunity to appreciate the Honorable Finance Minister for presenting such a bill. Sir, regarding the budget, we had a very detailed, in-depth discussion, so I am not going to the fiscal terms and the economic terms of the budget and the issues related to the budget. I am also directly coming to the tax proposals. Sir, the finance bill which gives effect to the taxation proposals to a budget estimate of 22,04,422 crores of rupees as tax revenue alone. That is anticipated for the financial year 22-23. Sir, 2021, the revised estimate, it is 20,78,936 crores. So the tax revenue budget estimate seems to be realistic, as the gross tax collection for the month of January 2022 is more than 1.4 lakh crores, which is highest since the inception of this GST. That is the highest which we have seen. That is a record collection during the month of January 2022. So definitely the estimate which is shown in the budget estimate of total gross tax revenue is realistic according to me. And it also estimates a fiscal deficit of 6.4 and a revenue deficit of 3.6. If the way this economy goes in such a way, definitely
we will be able to contain the fiscal deficit as well as revenue deficit as estimated. Sir, but my apprehension is regarding, and also the first question to the Honorable Finance Ministry is, what would be the impact of in the context of the Russian-Ukraine war? Because it is going to adversely affect the Indian economic situation. Why? Because Russia is the world's third largest producer and exporter of oil after USA and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is meeting 10% of the global demand also. So in such a situation, the elevated oil prices will also raise India's current account CAD. Also, it will be affected. It is now staying in a comfortable stage. Further, the higher price level of the oil products will inevitably drive in the inflation also. So I would like to caution the government, we have to be very careful in addressing the issue of this war situation so as to address the issues pertaining to the economic situation in our country. Sir, coming to the tax proposals, first point which I would like to make regarding the tax proposals is the tax GDP ratio. So the tax effort is generally measured by the tax GDP ratio. The buoyancy of the tax reflects the revenue generating capacity. Tax GDP ratio in India was 16.55 to 18.79 during 2005 to 2009. Now it is 9.9% to 11.2% of the GDP. That is between 2013-14 to 2022 to 2023. Sir, we have to improve the tax GDP ratio. So many recommendations have been given, but none of the recommendations have been implemented so far in a fruitful manner. Sir, we have to control the tax evasion effectively, make the tax administration accountable, remove the uncertainty for taxpayers, and move away from the statistic revenue principle to the progressive principles. These are the suggestions which I would like to make so as to have a good GDP tax ratio, tax GDP ratio to have a better financial position in our country. So with these principles in mind, in the year 2017, we have introduced the goods and service tax. I think that rightly Gaurav Gogoi today in the morning has said it is the right time to review the GST. I think that a special session or a special discussion is highly essential so as to review the performance of the GST during the last 4.5 years. So the purpose of the GST, the basic purpose of the introduction of the GST was to avoid multiplicity of the rate of tax, strict tax compliance, increase the tax base, and one nation, one tax. That was the principle which we have adopted at the time when Sri Arun Jaitley was introducing the GST. Sir, I would like to quote certain speeches of the late Honorable. The House is having great respect to late Sri Arun Jaitley. The first statement of his which I would like to quote was made in 2014. Sri Arun Jaitley said, I quote, "Consistency and transparency of taxation laws are essential for a consistent growth of revenue of the government," unquote. This is 2014. And the second one which echoes in my mind is from his speech at Peterson Institute of International Economics in Washington in April 2015. I quote, "The government sees taxpayers as partners and not as potential hostages of victims," unquote. And the third quoting which I would like to make is the quote of a judge of the High Court of Gujarat during an online hearing of a case. I quote, "It is very easy to reach the moon. We would take a chance. But to understand your policies and intricacies of this tax, oh God, with folded hands, we say that it is beyond our capacity to understand," unquote. This is the wordings of a judge regarding our tax structure which is prevailing in our country. We have merged the GST to make more simple and to make more effective and to have strict tax compliance. Sir, GST law is the most intricate tax law the country has ever seen. Even after 4.5 years of its implementation, still the entire system of GST is still in a premature stage.
transparency, consistency, and easy compliance and seamless input tax credit. That was the assurance which we have given at the time when it is introduced on the Independence Day. We remember the great historic day by the Honorable President has introduced it, that is, give a people to this country prior to its implementation. It may be noted that the slogan on the eve of implementation of GST Act 2017 was good and simple tax, and file your returns over a single click of the mouse. This was the slogan which was made at that time. Presently, even nil return cannot be filed with a single click of the mouse. That is the situation which is prevailing as far as GST is concerned. Sir, I am not here to protect the interest of the cunning habitual tax evaders or offenders, but here to reflect the agony suffered by an innocent micro, small and medium taxpayer in fulfilling his duties to the country. Sir, were we able to maintain the consistency and transparency of taxation laws in the country? Number one. Do we register a consistent growth in revenue of the central and the state governments? Are the taxpayers made partners of the system, or are they still treated as potential hostages or victims of the tax system? Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Finance Minister regarding an amendment. Also, I am moving an amendment on this issue also. That is, seamless input tax credit has been provided in the original GST, but it is quite unfortunate as far as the traders are complaining that because of the new amendment which you have put in section 38 of the Central GST Act by virtue of 108, clause 108 of the present finance bill, this is being taken away because the seamless input tax credits as envisioned by the legislature through three-tier system of return filing, that is GSTR1, GSTR2 and GSTR2, majority of the present day grievances and cases would not have occurred. So seamless input tax credit, which is an assurance given at the time of introduction of the GST, is not being complied with or is not being honored with. That has to be taken care of, for which I have already given a notice of amendment which is pending for at the time of after the reply it will be taken for consideration. And another point is regarding, I would like to submit regarding the gold also. Sir, India is the highest consumer of gold in the world. India's gold jewelry exports stood at US $30.9 billion and imports stood at US $26 billion in the financial year 2018-19. India's gem and jewelry sector is one of the largest in the world, contributing 29% to the global jewelry consumption. Sir, since the price of the gold stood very high, large-scale smuggling of gold is taking place throughout the country. The basic reasons for the illegal activity is due to higher rate of customs duty now prevailing. The rate of customs duty is the following. In 11-12, yes, I'm coming. In 2011-12 it was 1%, 12-13 it was 2%, 13-14 it was 4%, 6%, then 8%, 14-15 to 17-18, 10%, in 19 it was 12%, 12.5%, 2021 it was 10.75%. Now I fully appreciate the Honorable Minister. Now it has been reduced to 12.5% to 7.5%. The industry or the gem and jewelry industry demand further decline in the import tax because so as to avoid the smuggling also, and also further relaxation is required as far as these traders are concerned. Honest taxpayers are being punished in the case of gem and jewelry industry. Sir, coming to the cess and surcharge, that is a political point which I would like to make. Sir, 80th constitutional amendment provides for all central taxes except surcharge and cess to be shared between the central and the states. That means cess and surcharges will not be a part of the divisible pool. Till 2015-16, surcharge and cess was just 5 to 6% of the GTR, gross tax revenue. Now it has increased to 9%, more than 9% of the GTR. So the intention of imposing surcharge and cess, instead of imposing a rate of tax is to avoid sharing of the tax with the state. So that has to be relooked into. So that has to be relooked or reviewed. And regarding the custom duty, 2 points. Cashew nut. Sir, I am from the cashew capital of the country, from Kollam district. Thousands and thousands of poor workers are now in trouble. Cashew industry is in big trouble. 2.5% of customs duty is already imposed by the government. I draw the attention of the Honorable Finance Minister. Please withdraw the 2.5% of the customs duty on raw cashew nuts so as to save the cashew industry in Kerala. And also, I urge upon the Honorable Finance Minister to declare
a cashew revival package so as to save the industry, not only in Kollam, in Kerala, but throughout the country. Cashew industry is now progressing like anything, so that has to be done. And the last one is regarding the reduction of customs duty, enhancement of the customs duty of the titanium dioxide from 10% to 25%, even up to 20%, so as to save the domestic industry, just like AMML and IRE, which are dealing with the rarest industry. Sir, with these words, once again, I would like to take this opportunity opportunity to appreciate the Honorable Finance Minister for having such a moderate, non-controversial finance bill for the year 2022. Subhash Bahedia ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने इस फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया। महोदय जी, फाइनेंस बिल में जो ये अभी 2022 का आया है और उसमें जो खास बात है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको जो छोटी मोटी दिक्कत आ रही, उन दिक्कतों को दूर करना और जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके रास्ते बंद करना, ये दोनों काम इस फाइनेंस बिल में हुए हैं। महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के कारण कुछ स्टार्टअप्स में देरी हुई, उनके रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, उनके प्रोडक्शन में देरी हुई, तो इन देरी का कारण उनको स्टार्टअप का लाभ से वंचित नहीं किया जाए, इसलिए इस देरी की तारीखें इस फाइनेंस बिल में बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे जो मेट की दर थी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर, जो कंपनीज से ज्यादा थी, उसको समान जो है कंपनीज के लेवल पे इसको किया गया ताकि दोनों में एक समानता रहे। उसमें सरचार्ज भी जो काफी ज्यादा था उसको कम किया गया। महोदय जी, एक जो अभी दिया कि पहले परक्यूजिट जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में नौकरी करता था उसको परक्यूजिट मिलती थी, उसमें कभी टीडीएस नहीं कटता था और उसके कारण उसके टैक्स का एविजन हो जाता था परक्यूजिट्स का। तो अब पहली बार इस बिल के माध्यम से यह प्रोविजन किया गया कि किसी भी एम्प्लॉइज को अगर परक्यूजिट की वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को 10% जमा कराना पड़ेगा, ताकि जो पहले परक्यूजिट में बच जाता था टैक्स, उसको अब जो है वो रास्ता बंद हुआ। महोदय जी, एक प्रावधान और इसमें आया है कि कोविड के अंदर जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई है और वो जिन कंपनियों में काम करते हैं उनके परिवार के सदस्यों को कुछ भी देना चाहे तो 12 महीने के अंदर हेल्प के हिसाब से देना चाहे, वो टैक्स फ्री है। मेरा एक ही आग्रह कि इस 12 महीने की सीमा को हटा दिया जाए और उसमें वो कंपनी कभी भी उनको देवे वो टैक्स फ्री रहे, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाए। एक अभी नया अमेंडमेंट और आया है, टीडीएस जो है 50 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी जो बेची जाए तो उस पर 1% टीडीएस कटता था। तो पहले यह था कि एक्चुअल सेल्स प्राइस और या स्टैंप वैल्यू उसमें से जो कम हो उस पर टीडीएस काटना होता था, लेकिन अब जो सेल्स प्राइस या स्टैंप वैल्यू जो ज्यादा हो, मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरुआत की 1 मिनट बोला, अभी 1 मिनट में भी आपने घंटी बजा रहे हैं साहब। मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई एट 4 o'clock। पार्टी की तरफ से तीसरा स्पीकर ही ज्यादा नहीं बोले अभी तो, मेरे को कम से कम 10 मिनट तो दिया जाए। 1 more minute, please conclude। 1 मिनट में तो कहां से कंप्लीट होगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह जो दिया है, चलो मैं बड़ा ही बात नहीं, बात दूसरी बातें जो मांग है वो रख देता हूं। एक तो माननीय सभापति जी, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है और इसके कारण से
आज लाखों इन्वेस्टर जो छोटे छोटे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर दी है और उनके प्रोटेक्शन का कोई एक नहीं होने की वजह से सारा PACL, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो इनको बचाने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को जरूर इस बार लाया जाए। अब मैं आता हूं अब महोदय जी GST की तरफ। GST तो GST काउंसिल तय करती है, लेकिन GST काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वीटो पावर है, क्योंकि 1/3 वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है, और किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। इसलिए वीटो पावर हम कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रल के पास है। तो इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आज GST को लागू हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक GST के ट्रिब्यूनल्स का गठन नहीं हुआ है। काफी लिटिगेशन हो रहे हैं, अपीलेट कमिश्नर अपील्स के पास जाने के बाद वो सीधा जो है उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो इस कारण से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से वित्त मंत्री से कि ये GST के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जल्दी से जल्दी गठित की जाए। दूसरी एक कंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो दूसरा आप इंटरप्रेट करेंगे तो मेरा थोड़ा लय बिगड़ जाएगा, इसलिए माफी साहब लास्ट मिनट लास्ट 3 पॉइंट लास्ट 3 पॉइंट। तो एक दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट करता है, उसका शिपिंग बिल आइस गेट में वहां पे कस्टम ऑफिस वाले चढ़ाते हैं, और वो अपने आप DGFT के पोर्टल पे शो होना चाहिए, पर काफी केसेस में यह नहीं हो रहा। अब वो एक्सपोर्टर इधर से उधर दौड़ता है, इधर से क्यों नहीं हो रहा, पर उसका कई जवाब 1-1 साल तक नहीं मिलता। इस बारे में देखें। तीसरा एक लास्ट तीसरा ये कि अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात चल रही है GST के अंदर, तो मेरा सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो आउटपुट ड्यूटी जो कम है उसको मेंटेन रखा जाए, और इनपुट ड्यूटी को कम करके वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म किया जाए, न कि आउटपुट ड्यूटी को बढ़ा के उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए। यह विशेष आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दानिश जी, you have 2 people from your party. Ritesh is also there. No, I think Danish ji and Ritesh's name is also there. Have you given? So you have 5 minutes. I think I am on the only one speaker from my party. Let the leader decide. Then we'll go to Ritesh. Hey, I am the only one. You have 5 minutes. Please go ahead. Okay, thank you. सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया फाइनेंस बिल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बहुत बड़े वादे किए थे। एक तो रात 8 बजे 2016 में 8 नवंबर को जब रात में उन्होंने ऐलान किया कि नोटबंदी का ऐलान किया, डेमोनेटाइजेशन का, और कहा कि ये हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जो टेररिज्म में पैसा जा रहा है उसको रोकेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा आता है वो रुकेगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? जो 16 लाख करोड़ रुपया कैश में सर्कुलेट होता था, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि आरबीआई बहुत दिनों तक जो है आंकड़ा नहीं दे पाई कि कैश कितना जमा हुआ है, और पता ये चला कि जो नकली नोट था वो भी हमारे भारत सरकार के बैंकों में जमा कर दिया है ऐसे ब्लैक मार्केटियर्स ने जो काला धन रखे हुए थे। 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नकली भी बैंकों में जमा हो गया। उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे पता नहीं कि कितने बैंक के जो मैनेजर्स थे, जो मिले जुले थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें। और आज लगभग 2 गुना कैश जो है वो मार्केट में सर्कुलेटेड है। करीब 29 लाख करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। और इसकी वानगी
अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान देखने को मिली, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां, इतर व्यापारी के यहां पैसा पकड़ा गया और कई दिन लगे उसको काउंट होने में कि कितने 100 करोड़ रुपए थे। वो शुरू में आईटी सेल बहुत एक्टिव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने शुरू में कर दिया अरे ये इतर व्यापारी तो विपक्ष का है, लेकिन पता ये चला वो जो व्यापारी था उसके कनेक्शन जो है सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुए थे। उसका कोई डिनायल नहीं आया, नहीं उसका कोई डिनायल नहीं आया सत्ता पक्ष के लोगों का के घरों में इतना पैसा पकड़ा गया। माननीय सभापति जी, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस सरकार ने ये तय किया था कि किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुना होगी। सभापति महोदय, हम 2022 में खड़े हैं। मैं स्वयं किसान हूं और देश का किसान किस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ कितने दिन तक बैठा, सब जानते हैं कि किसानों की आज क्या दुर्दशा है। किसानों की आमदनी 2 गुना तो छोड़िए, जो उनकी लागत है उसके पे और ज्यादा पैसा उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मैं आपसे के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना का बहुत ढंढोरा पीटा गया और एक अब देखिए कितना अच्छी तरीके से गोल पोस्ट चेंज होते हैं इस सरकार के। आपने जो है सिलेंडर दे दिया, आपने रेगुलेटर दे दिया, लेकिन गैस कहां से आएगी? आज सत्ता पक्ष की माननीय एक सांसद, 1 more minute, please conclude. सर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर। आपने सत्ता पक्ष की एक सांसद कह रही थी कि बायोगैस उस सिलेंडर में बायोगैस ले जाइए, गोबर गैस का प्लांट लगाइए और उस सिलेंडर के थ्रू जो है, हाँ सत्ता पक्ष की सांसद ने यहाँ नया एक आविष्कार यहाँ दिया। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा लगातार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। अभी बहुत एक डिस्कशन चल रहा है देश के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी, भाई सरकार ये तय करे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना है या नहीं करना है। भाई एक चीज तय कर ली जाए ना कि क्यों ऐसे अलाउ किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं दो तीन कंक्लूड कीजिए आप, टुडे देयर इज नो टाइम आपका लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी प्रायोरिटीज तय करे। दूसरी चीज सर, आज देख रहे हैं हम किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो टैक्स एजेंसीज हैं, वो सिंगल आउट करके जो विपक्ष के लोग हैं या जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सरकार की लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, भाई मैं तो अपने 15 लाख का हिसाब अब नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हर अगर ब्लैक मनी लाएंगे और हर किसी को 15 लाख देंगे, तो कम से कम मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी है। सर तो एक मिनट में अपनी बात मैंने आपसे 1 मिनट सर मेरी पार्टी का टाइम, ठीक है, कंक्लूड प्लीज। सर मेरी पार्टी का टाइम है, इतना प्लीज कंक्लूड। मेरी पार्टी का टाइम है, पार्टी ने लिख के दिया है। 5 minutes, your party time is over. Please conclude. Sir, my party time is not 5 minutes. Please conclude. Sir, please. Sir, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे जो सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है। आपने कहा था कि स्विस बैंक से ब्लैक मनी लेकर आएंगे। मैं अभी पिछले दिनों ये अखबार में छपा है किस तरीके से एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने फैमिली का ट्रस्ट स्विस के अंदर था, वहां पर बाकायदे सरकार ने नाम आ गए। क्यों नहीं उन लोग? मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करते हूं, नमन करता हूं। निर्मला सीतारमण जी को, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री पूरा भारत का 130 करोड़ যে বাংলায় 130 কোটি মানুষ বেঁচে আছেন, এটার জন্য প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই নির্মলা সীতারমণজিকে। আমরা অনেক আগে প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু যেভাবে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে গরিব চাষি থেকে শুরু করে
সমস্ত মানুষের উপকার হয়েছে, গোটা ভারতবর্ষ বুক জাগিয়ে বলছে আমরা বেঁচে আছি, তার জন্য এই প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম জানাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী আজকে যে কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকে সেখানে পুরোপুরি ভাবে আতঙ্কবাদী রাজ্য তৈরি হয়েছে। আমরা দেখেছি উনি তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার জন্য মমতা ব্যানার্জি যে কাজগুলো করেননি, প্রধানমন্ত্রী যে পশ্চিমবাংলার জন্য পুরো ভারতবর্ষের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি যোজনা করেছেন। Put your point and conclude. One more minute. 2 मिनट सर, बंगाल के लिए तो सर 2 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए सर। जो बात बोलते हैं जीएसटी का, जो बात बोलते हैं ब्लैक मनी का, जो बात बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी का, से में एक ही बोलेंगे, नोट बंदी होने के बाद जब सीबीआई और ईडी ने पकड़ने जाते हैं कोई कोयला खदान में केलेंकारी करते हैं तो बोलते हैं क्यों करते हैं, तो कहां से सर এইটা আপনার ভালো হবে। আমরা বলতে চাইছি পশ্চিমবাংলায় আজকে যেভাবে বীরভূমে ঘটনা ঘটেছে, বীরভূমে যে 12 জনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, এটার জন্য তদন্ত করা হোক। আমরা অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে আরবিআই ডিজিটাল কারেন্সি করার জন্য, কারণ পশ্চিমবাংলায় যে কেলেঙ্কারি হয়েছে কয়লা কেলেঙ্কারি, সেই কেলেঙ্কারিগুলোকে ধরা হোক। আমরা জানতে চাইছি যে ইনকাম ট্যাক্স কেন পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বালি উত্তোলন করে যেভাবে মার্ডার করা হচ্ছে, যেভাবে বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যে হত্যা করিয়েছে তাকে অ্যারেস্ট করা হোক। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীজিকে উজ্জ্বলা যোজনা বীমা যে প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের বাংলার জন্য তুলে দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা করার জন্য। ভারতবর্ষের সবাই আমরা বেঁচে আছি, আমরা ধন্যবাদ জানাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সব মানুষ বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু বাংলাতে কোন কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প চুরি করা হয়, কোন প্রকল্প কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নামে হতে দেয় না, যা অত্যন্ত লজ্জার। কোন সাংসদ দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না যে আপনাদের গাড়িতে বোম পড়ে, কিন্তু বাংলার সাংসদদের গাড়িতে বোম পড়ে, লজ্জার বিষয়। এটাও কিন্তু তদন্ত করা উচিত। বাংলার সাংসদরা নিজের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করছে, এমএলএরা জীবন বিপন্ন করে লড়াই চলছে। আজকে বিরোধী দলে কোনো এমপি বলতে পারবে না উত্তরবঙ্গে তাদের বোম পড়ে, কিন্তু বাংলায় আজকে আমরা ভীষণ কষ্টে আছি। এটার জন্য বাংলায় 356 জারি করা হোক এবং বাংলার গরিব কৃষকরা যারা আজকে খেতে পাচ্ছে না তাদের জন্য আজকে অর্থমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করব একটা আমাদের কৃষকদের জন্য ওখানে একটা নতুন গ্র্যান্ট দেওয়া হোক, বাংলার কৃষকরা যাতে বেঁচে থাকে। বাংলার স্টুডেন্টরা যারা শিক্ষকের পরীক্ষা দিচ্ছে তারা মশারি টাঙিয়ে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের সামনে বসে আছে। বাংলায় আজ কোনো কিছু হচ্ছে না, তাই প্রধানমন্ত্রীর দয়াতে আমরা বাংলায় বেঁচে আছি। অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ যে আপনি আসুন এবং আমাদের শিক্ষিত যুবকদেরকে কিছু কাজের ব্যবস্থা করুন এবং আমরা সাপোর্ট করছি। আর সাপোর্ট দ্য বিল, দ্য ইকোনমিক্স বিল আমরা সাপোর্ট করছি এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বাংলায় অরাজকতা সরকার চলছে, এটা ধ্বংস করুন। शून्यकाल भी है। श्रीकांत शिंदे जी 2 मिनट में नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात एक कोट से शुरुआत करना चाहूंगा, एल्बर्ट आइंस्टीन जी का, कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स। मुझे लगता है कि इस कोट से, इस आइंस्टाइन की कोट से सभी आपने को एसोसिएट कर पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को कुछ भी एग्जाम्पशन या स्लैब बेनिफिट नहीं दिया गया है, जो एक चिंता का विषय है। और क्योंकि कोरोना महामारी में समय बहुत लोग बेरोजगार हुए और आज हाई टैक्स और लो इनकम सबसे प्रमुख समस्या है, जिसका निवारण कैसे किया जाए उस पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जैसा सुप्रिया सुळे जी ने कहा अपने भाषण में कि कैसे इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अक्सर सुनते थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मुझे लगता है कि अभी स्लोगन बदल के ईडी और आईटी का जो रेड चल रहे हैं, स्लोगन बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगला स्लोगन होगा कुछ दिन तो गुजारो हवालात में, और इसके लिए कितने हवालात लगेंगे पता नहीं। और यह जांच एजेंसी उसको पावर देने का काम भी इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है। क्लॉज 96 के माध्यम से रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन लाया गया है टू वैलिडेट एनी एक्शन टेकन और ड्यूटीज परफॉर्म बाय ऑफिसर्स ऑफ डीआरआई और कस्टम्स बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस बिल 2022।
notwithstanding the decision of the courts, tribunals or authorities. मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतना पावर इन अथॉरिटीज को क्यों दिया जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है? कि सरकार की मंशा है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करना, और इन अधिकारियों को इतना पावर जो सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि इससे एक डायलॉग मुझे याद आता है कि सेक्रेट गेम्स, मुझे लगता है कि सभी ने देखा होगा, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है वहां पर कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं। मुझे लगता है कि ये अभी अधिकारियों को लगने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अधिकारी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जाके आज ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यहां पर लाया गया है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन आपकी नीतियां से ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस ज्यादा आसान हो गया है। आंकड़े हमारे साथी गौरव गोगोई द्वारा दिए गए थे कि 30,000 से 35,000 रिच इंडियंस वुड हैव लेफ्ट द कंट्री इन द लास्ट 5 years, और 15 मार्च को सरकार द्वारा दिए गए जवाब में ये बताया गया है कि 5,900 बिजनेस रजिस्टर्ड विद एमएसएमई मिनिस्ट्री एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर शट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। यह आंकड़े देश के लिए अच्छे, खत्म कर रहा हूं, यह आंकड़े देश के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि कुछ उद्योगपतियों फ्रॉड करके भाग रहे हैं और बाकी आपकी नीतियों के कारण। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना में, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण लाखों छात्रों को भारत सरकार ने इवैक्यूएट किया, और बहुत सारे सांसदों की मांग से इन बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हुई है, मुझे लगता है कि इनको भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी लायबिलिटी हमारे देश पर होगी। प्राइस राइज, मुझे लगता है कि प्राइस राइज खत्म कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट है प्राइस राइज। मुझे लगता है कि ये पेट्रोल डीजल जो है वो इलेक्शन से डायरेक्ट संबंधित है। जब भी इलेक्शन होता है तो प्राइस कम हो जाती है, इलेक्शन के बाद प्राइस डबल हो जाती है। मुझे लगता है अभी भी कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि सरकार रोज और आपका टारगेट था कि 2022 तक जिस अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाया जा रहा है, हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, सबको घर मिलेगा, लेकिन 2022 वित्त वर्ष खत्म होने के सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कितने काम हुए हैं और कितने लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार 2 मिनट है, 4 घड़ी मिनट देख लेना और 2 मिनट आप बाद 4 मिनट दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा ठीक 4 मिनट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। इन अ सिंगल stroke, the government has managed to hamper India's cryptocurrency future. While there is no clarity on actually how the government intends to regulate the space of cryptocurrency, since there is not even a draft bill, or there is a bill in front of a parliamentary committee, the finance minister has made certain changes to the regulation of virtual digital asset class that will greatly hamper India's Web 3.0 space. The Web 3.0 space is not just cryptocurrencies, whether it's movies, music, gaming, ticketing, commerce. It intends to revolutionize the world with smart contracts and the metaverse. The interchanging of assets across different blockchains is critical to the business of 3.0, Web 3.0. What does a 1% TDS? What does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथीरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% TDS लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप TDS लगाएंगे तो ये सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा
कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है, सर मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं सर खत्म कर कंक्लूजन में सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए और इस एसेट क्लास पे 1% टीडीएस को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स, एक टीडीएस न लगाइए। फिल्म बनाने जा रहे हो क्या जी? माननीय मंत्री जी, धन्यवाद सर। I specifically thank Honorable Speaker and also all the Honorable members for having agreed to have the discussion on the finance bill today being a Friday. I also thank all the members who were considerate enough to have the private members bill shifted to some other alternative day. And the reason for this, in spite of some of the members who had reservations, the reasons for this is, sir, because we are already on the last week of the month, and ideally by 1st April, I would like to have all the departments and ministries receive their funds, but the process of approval after this will have to go through several stages and also the Rajya Sabha, and that is why today, with your kind permission, we are able to handle it on a Friday afternoon. And I, in fact, from my heart, thank all the members who have taken the time to be here and participate in the discussions. More than 20 members have spoken on this finance bill today. I just want to start with the finance bill, the provisions for taxation. Other than the discussion on the budget, this discussion on the finance bill, like the way many members have seen through the kind of details and be able to highlight what has been said in the finance bill, actually highlights the way in which, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, during the pandemic and coming out of the pandemic and aiding recovery, we have taken a conscious decision. And I hope I'm able to articulate this fact to all the members, that we have taken a conscious position not to fund the recovery through any additional taxes. And that is why last year and this year, the continuity in not bringing newer taxation is something which I would like to place on the record of this House, because I want to draw on the reports which have come out of the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, which very clearly said at least 32 countries increased various tax rates during the pandemic. India did not. 32 countries during the pandemic increased personal income, meaning tax on personal income, or tax on corporate income, or environment-related taxes were raised, or health-related taxes were raised, or excise duties were raised. We have not done that last year, nor have we done it this year. And which are these countries which had to depend on tax increases to meet the expenses of the pandemic? They are no less developed countries, absolutely developed countries, large countries like Germany, France, Canada, UK, and Russia, apart from very many smaller economies, all of which depended on increasing taxation to meet the demands of the COVID pandemic and also the recovery requirements. So I would like to place that on the table.
because the clear instruction, first guidance, in fact, I received while preparing the 21 budget and preparing 22 budget was no, we shall not take the taxation route. I remember the media last year was also suggesting that there could be a COVID tax, but we didn't resort to any one of these steps to burden the common man. And as a result, therefore, this finance bill has been received as being one of the boring ones, one of the insipid ones, one of them which had nothing great about it. But it is indeed, I would think, a budget which did not burden the common public, but yet put the money where the multiplier will be the maximum, where the infrastructure creation of assets will happen, and on that, we did not come up with small allowances in the budget, but a big-time increase in the infrastructure spending. There are more to say on that, sir, but I would come to that a bit later after I answer the specific questions which members have raised on issues pertaining to the features of the budget. I'll start with the member Gaurav Gogoi, who actually has been providing, and in his comments, came up with a lot of positive suggestions as to how we can take some of these issues. I just wanted to specifically tell him that the corporate tax reduction has actually been carried out as you observed it. There is no middle class relief for the middle class. Has there been any study undertaken to assess impact of corporate rate reduction is one of the questions which you've raised. Sir, through you, I would like to inform the honourable member. For individuals, due to rebate, they don't pay any tax if income is below 5 lakhs. This is well known. This is very well known. Those opting for tax savings, of course, pay no tax even on higher income, as they can claim deduction for tax saving and for bringing their income below 5 lakhs. For those who are not opting for any of these exemptions, last year we came out with a separate track, a second alternative tax saving scheme. We have come up with that kind of a income tax, layer with which they can pay lesser tax and benefit from it. But about the corporate tax reduction, sir, it's actually helped the economy, it's helped the government, and it's also helped the companies, because we are now starting to see the positive impact. In the year 18-19, our corporate tax collection was only about 6.6 lakh crores. Then COVID happened, so you couldn't have expected anything to come through there. In spite of tax reduction and COVID impact, we have already collected corporate tax of 7.3 lakh crores till yesterday. So the reduction in corporate tax has actually now given us the reward in spite of the intervening year being under COVID. So I wanted to inform the Honourable Member Gogoi on the corporate tax. It is actually also helping the flow of money and also making sure that the health of the companies are improving, thereby improving the possibilities of greater employment. Member Gogoi also voiced the concern, which I thought even as we presented the budget, we had explained it possibly last year and again this year, that particularly on umbrella, this question of increasing custom duty on umbrella. Sir, I think I did explain it, but I want to reiterate the point. Umbrellas are manufactured in India, and nearly 25 million pieces of umbrella, individual umbrellas, are imported every year into this country. And they come from one country. This 25 million pieces of umbrella come from one country. Do we need it? Can we not manufacture? We are manufacturing. Can we not strengthen that? And therefore, we have imposed this custom duty. This is only to encourage the MSMEs who are producing it. So then the other question was raised about revocation of the ADD and CVD on steels, whether it is permanent. So the ADD and CVDs, the countervailing duties on steel, have been revoked to provide relief to the user industry
because I'm sure all honorable members see that integrated steel manufacturers are very buoyant now. They're able to export a lot. In fact, they're seeing unprecedented size and quantum of export. And therefore, today's steel has become probably expensive for many of our downstream industries. So we have revoked the CVD or the ADD to provide relief to our user industry, which suffers because of the increased price of steel. And the rising in the price of steel doesn't seem to look to get abated sooner. And therefore, we wanted to be supportive of the MSME and therefore allowed to revoke the ADD. So I just want to make sure that Honourable Member Gogoi on his concerns is addressed. So then there were issues about IFSC, which again Member Gaurav Gogoi raised. IFSC is a premier center through which global financial companies are coming into India. We are seeing a rapid change in terms of the kind of uses through which IFSC is benefiting all of us. Very good results are being shown. Totally 21 banks have got licenses. Total banking asset size has increased more than 25 billion US dollars. Asset size alone has increased $25 billion. Then total banking transactions has crossed $156 billion US. 2 stock exchanges have also opened with daily trading value of index derivatives of 13.14 billion US dollars, and daily trade value of currency derivatives are of the level of 13 million US dollars. Commodity derivatives are at 174 million US dollars. So the footfall, the extent of business and the coverage and the kind of generation of activity are distinctly there for all of us to see. More than 50 funds have registered themselves in the IFSC. Amount committed by the private equity and venture capital is about 3.8 billion US dollars. Hedge funds have committed 845 million US dollars, and total amount committed by the AIFs, alternative investment funds, is to the extent of 4.6 billion US dollars. 19 insurance companies have started operation in the IFSC, and they have underwritten insurance premium of more than 300 million US dollars, including by intermediaries. So the progress that we are seeing in the IFSC, because this has been an issue on which every budget we seem to ask questions and also answer them saying, you are supporting IFSC, has it really shown all the difference? Has it made a difference to the kind of concessions made? Yes, more than adequately, the fiscal concessions given have shown us tangible results in the IFSC. So on virtual digital currency, a lot of members have spoken. One aspect which was raised was government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity. And this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it. Hamare Ritesh Pandey ji raised it. Pinaki ji raised it. So I just want to say, there is no confusing signals. We are very clear that there are consultations going on as to whether we want to regulate it, as to whether we want to regulate it to some extent or really very much or totally ban it, are all after the consultation which will be concluded, and once it's concluded, the matter will come out. But till then, we are taxing it also because there's a lot of reported activity happening there. A lot of transactions are happening, and from the way the concerns being expressed by several members, there is definitely a commonplace knowledge that a lot of exchanges are happening, people are putting money, people are taking money, people are creating assets, and the assets are being sold and bought. So obviously government made its position clear, saying we shall tax the money being generated out of it, and that is why we have come out with the proposal to tax at 30%. And also the TDS has been brought in. Like always, TDS is more for tracking.
It's not an additional tax. It's not a new tax. It is a tax which is going to help people to track it, but at the same time, for the payer, for the person who's paid the 1% TDS, he can always reconcile it with the total tax that he has to pay to the government. Minus it if he's paid more, or add it if he has to pay additionally. So there is no new taxation because of the TDS, but the TDS principle has always been same, and that probably is also one of the reasons why the tax base has widened. Not here on the digital, but in general, the tax base has been widening, where we had only about 5 point something earlier to start with in 2014. We are now touching 9.1 crore people, and that is because we are able to find the money trail of people who seem to be spending money, who file assessments sometimes, but who don't pay even if they are expected to pay. So TDS is always one legitimate way through which we are tracking the transactions and therefore being helpful to widen the base. Sir, I'm just asking your guidance, sir. Earlier once you had requested me not to answer issues raised by members who are not present in the House. Should I do it or should I not? And if I do, which is Section 132 in the CGST Act, which provides for imprisonment in specific cases. And the specific cases are what? Evasion of tax, availing fraudulent input tax credit, deliberately tampering of financial records, false information with the intent to evade payment of tax. These are the specific items under which, after proper adjudication, imprisonment is done if it is necessary to be taken as a step. Imprisonment is only in cases of serious nature, such as this, and not for minor mistakes or wrong entries. So, in normal compliances cases, where records are maintained, where furnishing of returns happen, no imprisonment is ever invoked. Further, the GST law also does not provide for imprisonment in cases where the amount of tax evaded or the ITC availed and the availed and utilized is less than the threshold limit of 1 crore. So anything below it is anyway not going to be taken up for imprisonment. These provisions were made as per the recommendation of the GST Council, where states are also equally present, sir. And in fact, that one line is actually the answer or my response for every such suggestion which has come on the GST, inclusive of Honourable Member N.K. Premachandran, where GST-related several suggestions have come, also commenting on the amendments which we have brought in this finance bill about those amendments related to GST. They have not been brought by me. They are not brought by Ministry of Finance. They are brought by us post the GST Council's suggestion, post the GST Council saying, yes, this should go through, so we are bringing it in the finance bill. So it's not being brought by the central government. So PMLA, ED has all naturally attracted a lot of attention and also observations made by honourable members. I'm in particular referring to arrests made under PMLA without even registration of an FIR. I want to address that specific question raised by Honourable Member Supriya, that first of all, offences under the PMLA are offences invariably linked to some other offence which is listed in the schedule of the Act. So unless there is an offence which is for which there is an FIR, for which something else has already commenced, on which, let us say, the CBI or somebody else has acted, a predicate offence, which is what the ED deals with, cannot be picked up. So ED is never first to come into the scene. ED always comes in following the trail of the main offence, which is taken up by some other FIR, and post that, when the trail goes on and you realize money has been laundered, the PMLA can be invoked, then comes the ED. So ED is never the first one in the scene. If you see ED, be sure there's something else already with you.
So Midun Reddy ji has spoken about several things about faceless assessment. Sir, Midun Reddy ji has raised questions about, and also Pinaki Mishra ji has raised questions about faceless assessments or seeing frequent amendments. I'd like to assure the honourable members that the faceless assessment has been well received. People are relieved that they don't have to go to the offices. But if there are amendments, it's more because we just want to ensure that there are no loose ends, and where actually eventually after the faceless assessment has gone through stage 1, stage 2, and actually there is a need for some personal interaction at the final stages, we want to come in, we make a small amendment. So these amendments have been proposed in the bill to ensure that the taxpayer who wants to have a hearing at the eventual final stage, having gone through everything, he gets a hearing through video conference. So these kind of changes are more for the facilitation. There was also this question about a retrospective aspect which is part of this bill, and that is only because one particular issue where the surcharge on tax and cess on tax have been over some years, if I can use the word, misused, where people have treated it as their exemptions or expenditure, business expenditures undertaken, and therefore they think that it can be used for deleting that level of income from their taxable income. So that has become a very, very confusing point on which people have gone to courts also. So that amendment with a retrospective effect has been brought more for clarity. And that is not going to burden the taxpayer, because what we've done is, please approach from your side claiming that this is shown as undisclosed income. And if you come on your own, there is no penalty. We treat it again, and the local commissioner of income tax will be able to reassess your income, including that which has been otherwise shown as expenditure, business expenditure. And the income now reassessed, you can pay up what has got to be paid legitimately as tax. There is no penalty if you come on your own. And unless we take it back to the time from when this misuse has started, there will always be a hiatus, and that hiatus will lead to confusion. Some people will continue to benefit from that misuse, and the others would have done it fairly. So it is only for that explanatory purpose that retrospective aspect has been brought in. Tax rationalization, sir, I think we've started doing from the time for the direct taxation. We've started doing it from the corporate tax business, and also for the income tax, where we gave a second parallel track. And for the GST, we have a group of ministers headed by our chief minister who is looking into it so that we can get back to being revenue neutral, rationalize the number of slabs that we have. So Pinaki Mishra ji also asked about the black money in the economy. Very few taxpayers are paying. I think I partly answered this by saying 5 crore taxpayers were there a couple of years ago. Now it's gone up to 9 crores. We have taken many steps, sir, for widening and deepening of the tax base. We have reduced tax rates and removed exemptions. And through technology, I place a lot of emphasis on this. Through technology, we have also made compliance easy, tax payment is making headway, and also assessment is made easier. So all this has brought in a greater buoyancy like never before. I would think when people accept the way in which technology is giving us greater room to operate, we will have the base widen a lot more. Sir, I partly referred to also Sri N.K. Premchandran ji talking about GST is not simple. And he invoked the statement of the former finance minister, Sri Jaitley, saying, no, it will be a very simple tax. Definitely, difficulties which were there, we have periodically sat with the stakeholders and tried removing it. Nil return under GST, both GSTR 3B as well as GSTR 1 can be filed without logging in onto the GST portal by a simple SMS through mobile. So if the portal through which you had to do it is
a bit cumbersome for you, there is also an alternative way by using the SMS. But the other issues related to the CGST Act and items that has got to be looked at for differential rate, I would go back to the GST Council's suggestions which are being brought in here. They are not mine. I just want to highlight that. So other than that, I think members who had raised some of the very significant issues are not here. So going by your advice and also keeping the constraint in mind, I just want to be sure that I don't take... So I won't go into the details of questions that they had asked. Sir, one last point I want to emphasize here. As I said, we started by saying that we have not brought in extra burden. And I know not just during the discussion of the finance bill, but even otherwise, people have been saying, how could you raise taxes? How could you raise the fuel price? How could you? Sir, global situation, war-like situation, is not a time when we are looking at raising. And it has nothing to do with the election time. If the oil marketing companies, the oil ministers seated here, think that they're procuring on a 15-day average higher rate, obviously we will have to bear. And this war, which is happening in Ukraine, the impact of that is on all the countries. Supply chains are disrupted, particularly of crude oil and so on. So I would just very quickly recall, one based on the crude and the war-like situation, when India is very globally connected in the value chains. If even in 1951, Pandit Jawaharlal Nehru could say that a Korean war can affect Indian inflation, I will have to say it, because war anywhere can affect us. Today, in a globally connected day, it will affect, definitely. At that time, did he say, sorry for my Hindi, but the speech was in Hindi, so I'm going to read it in Hindi. Pardon me, those who are Hindi. दाम बढ़ते जाते हैं, quote, दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का दाम बढ़ता है, राशनिंग और क्या-क्या बातें आई और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा. आपने शिकायत की और आपको परेशानी की शिकायत करनी भी है. हम ऐसे जगड़ गए दुनिया के वकायदे में, जैसे का वहां कोरिया में लड़ाई हुई, उसका असर यहां पड़, चीजों के दाम बढ़ जाता है. अमेरिका में कुछ हो जाए, उसका असर यहां पर चीजों पर, उसके दाम पर पड़ता है. Unquote. Korea, America, in 1951, when India was not globally connected, that can be used for justifying a price rise. But if genuinely today Ukraine is hitting us, sir, and if we say war is causing the price rise, it's not acceptable. How can this dogla... Sir? And final statement, sir. Dohra. Finally, sir, we as a government and Prime Minister Modi as a Prime Minister and as a Chief Minister strongly believed in lowering taxes, bringing the burden on common man to be lesser, and we are continuously successfully doing it steadily. Just to compare what prevailed earlier, sir, and today. Sir, in February 28, 1970 Union Budget, in a speech, Prime Minister Indira Gandhi, who also held the Finance Minister's office at that time, increased the marginal tax rate by 11 percentage points to 93.5% on all incomes above 2 lakh. 93.5. Indira Gandhi's budget speech in 1970, I'm quoting, sir. With the addition of the surcharge at 10%, the maximum rate of 93.5% will now be reached in the slab over 2 lakh rupees, as against 82.5% in the slab over 2.5 lakh at present. Unquote. I dread to read this, sir. 93.5% tax. And today when we do 1% TDS, we are being mocked at, we are being hit at.
just to bring it to the current day economy. As per our current tax slab, sir, the highest tax slab for those earning more than 10 lakh is just 30%. Under the new and optional tax slabs announced in 2020, this rate is 30%, and that rate would apply to earnings more than 15 lakhs. So, tax is a matter in which the Congress party never thought of reducing the common man's burden, whereas we are constantly working to make sure that people are not burdened, and we give them maximum benefit through the various ways, and people who make and run businesses are treated with a sense of pride so that they can create jobs. We don't treat them as people from whom we have to suck out everything so that, we have the vicarious pleasure of killing their business as well. We don't do that. So with that, sir, I seek your support and also the entire House's support. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमने एक बात उठाई थी जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेकर, कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक्सटेंशन दिया, क्या ये केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल ये सोच रही है कि राज्य के वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए कि केंद्र सरकार जीएसटी कॉम्पेंसेशन में भी एक्सटेंशन दे? और सर, मुझे पता नहीं कि दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में 2024 में 1950, 1970 की बात होती है। मैं भी पार्लियामेंट दूसरे डिबेट्स में देखता हूँ, ऐसा मैं डिबेट दूसरे देखता नहीं हूँ। सर मेरा नाम लिया था, एक स्मॉल क्वेश्चन इन्होंने। यहाँ इजाजत स्पीकर देता है, मंत्री जी नहीं देते। प्रश्न है कि विधेयक पर क्या बोल रही है आपको? एक मिनट, हाँ, क्या बोल रहे हैं? There are two specific issues which happened in the state where I come from, Maharashtra. The allegation was 100 crores, and when the FIR was lodged, it was 1. And similar was 55 lakh allegation, and then they said it was a typo error and it was 5 lakhs. So what happens in such a situation when an allegation is made, and then from 100 crores it's 1 crore, 55 lakhs it's 5 lakhs, and there's an arrest made and there's nothing happened. So is there something where you could put a cap where, is my question. प्रश्न ये कि आप देना चाहते हैं? बोल देता हूं सर. सर, member के concern is right. States do have a problem about how they're going to handle their finances. Revenue generation, collection of tax, states and also center are all improving. I'm not saying that's the reason why nothing would happen. As it is from July 22, the cess for compensation payment is already extended till March 26. So, extension has happened to meet the payment dues, because many members do raise this state, the due for this state is so much, that state is so much. Those are not decided by me. The dues are agreed. As of now, 53,000 odd crores are pending, and that is also an amount decided by the council. Abhi itna borrow karke do, baad mein itna borrow karke do, बाद में इसका इंटरेस्ट और इसके ऊपर से जो भी देना है वो सब सेस कलेक्शन जो जुलाई 22 से एक्सटेंड होगा उसके द्वारा भरपाई करेंगे. ये फॉर्मूला काउंसिल में तय हुआ. सो मैं जो देना है, अब तक जितना देना है, जैसे तय हुआ वैसे मैंने देखकर आ रही हूं, कुछ बचा नहीं है. मगर ये 53,000 में हाउस में स्पष्ट बोल चुकी हूं कि हाँ पेंडिंग है. मैं कहां इसको छुपा रहा हूं? अरे हमारे एक स्टेट के लिए नहीं दिए, बाकी को दिए, कांग्रेस को नहीं दे रहे, हो बीजेपी को दे रहे. बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं. ये पॉलिटिक्स करना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए. हर स्टेट को जीएसटी काउंसिल जैसे तय करता है वैसे ही हम देते हैं. अभी तक जो देना है दे चुके हैं. आने वाले 22 से जो कलेक्ट होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट का और फॉर्मूला के तहत जो कम पड़ा उसको भरपाई करने के लिए वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड टिल जून मार्च 26. सो स्पष्ट है, सबको मालूम है, मगर कुछ अस्त्र नहीं है, इसीलिए इसको पकड़ लो. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ.
हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 से 5 प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2 से 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 9 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 से 15 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6। Sir, I move the amendments, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 17 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 70 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 से 27 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 7 से 11। I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 28 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 से 37 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 12 और 13। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संख्या 12 और 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 39 से 47 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 14। Sir, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14
को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 15। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move for Amendment 49A that this House do suspend Clause 1 of Rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates in its application to the government. Amendment number 16 to the Finance Bill 2022, that this amendment may be allowed to be moved. 49A. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, आप संशोधन संख्या 16 को प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 49A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 49A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 और 51 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 70 से 22। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 52 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 23 और 24। Sir, I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 और 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन खंड 53 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 54 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 55 से 57 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 26 से 28। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 से 28 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।
प्रश्न है कि खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29 से 32। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 60 से 65 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 66 से 92 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 33 और 34। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 93 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 और 36। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 94 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वाले के पक्ष में खंड 95 से 97 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। Sir, I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 98 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 99 से 102 विधेयक का अंग बना। N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 62 से 68। Sir, thank you very much, sir. Sir, my amendment is amendment to section 38 of the Central GST Act. I have already spoken at the time of my speech, and the Honourable Ministry has responded to it also. This is the genuine and serious demand of the small and medium-scale traders, because the seamless input tax credit is being choked by virtue of this amendment. That is why I am seeking some amendments. But the Honourable Ministry has responded that this House is not able to have the amendment because we have to go to the GST Council. Sir, one second. At the time when Arun Jaitley was moving the bill, we have supported the bill in full spirit, in its letter and spirit. Now I am feeling guilty conscious that the Parliament is not able to even make any amendment to this. We have to go and appeal to the GST Council for having the amendment. Means the sovereign functions of the Parliament itself is in question. Anyway, Madam Minister, my appeal is kindly. Yeah, I was saying. आप आपस में डिबेट I am fully agree. No, माननीय सदस्य, please. Yes, sir. Sir, I am fully agree. See the pathetic situation of the Parliament of India
if we want to have some tax on union tax, then central government tax, you have to go to the GST Council. That's why, Madam, kindly take up this matter in the GST Council. It's a genuine and serious demand of the small scale and medium traders. As far as the seamless input tax credit has to be given, there is no cascading effect to be given to them. Yes, sir. प्रश्न है कि एन के प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 103 से 125 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 38। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित पहली अनुसूची विधेयक का अंग बनी। एन के प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 69। Yes, sir. This is customs duty regarding the gold. This is within the powers of our parliament. Can be done. I am moving the amendment, sir, regarding gold. I am moving. प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री एन के प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। So I move the amendment, sir. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 70 और 71। Sir, this is amendment to the third schedule. That is 2.5% of import duty on raw cashew nuts. So the industry is affected. Cashew workers are affected. 95% of the workers are women workers belonging to the common lower strata. Kindly consider this amendment of taking up 2.5% of customs duty. प्रश्न है कि श्री एन I just want to respond on that one, because on cashew we've discussed it with the representation brought by the Honorable MP and many others as well. The only reason, because Honorable MP is expecting from 2.5 to be brought to nil, literally zero rate. The only reason why we've retained it at 2.5 is because of the kisan who cultivate cashew. उनका भी ये लग रहा है कि please, unless the duty is kept somewhere, एकदम भारी संख्या में आपको import आ जाएगा cashew का. So there is a balance that we are trying to do. I understand the industry needs it because they also want to import it for lesser cost. But those who are producing the cashew also want some kind of a response from the government. So every time we have to balance the interest, whilst I fully appreciate the concern, because that's the area which actually has a very strong hold on cashew and cashew industry, and I fully appreciate that. But the reason why I've kept that at that one. Also, I take this opportunity to say, Honourable Member need not feel regret about GST. Council has to take a call. We have lost our... Not at all, sir. In a way, we are going to come back to the Parliament for every kind of amendment that we have to. The present bill also has a GST amendment. But to look at the GST Council with one lesser status, it's a constitutional body. It has representation of all the states. In a federal structure, this is one institution which actually shows federalism. So let's not regret it. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 70 और 71 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें,
मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा ना वालों के पक्ष संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित 30वीं अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित 30वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगणों, जैसा कि आपको विदित है कि इस विधेयक में एक नया खंड जोड़ा गया है, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों तथा उपखंडों के तदनुसार पुनः क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। काल, सबका काल। माननीय सदस्य शांति से जाएं। हाँ, रेडी है। जी सुबह बोल सुकांत मजमूदार। बोलने का आपसे परमिशन मांगा है, इसलिए आपने परमिशन देके मुझे बाधित कीजिए। স্যার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এক দেশ এক রেশন কার্ড এই গোটা দেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে এই এক দেশ এক রেশন কার্ড এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ফলে এক দেশ এক রেশন কার্ড এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং আধার কার্ডকে রেশন কার্ডের সাথে সংযুক্তিকরণে বাধ্য হয়। এই বাধ্য হওয়ার পর দেখা গেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে 1,70,00,000 রেশন কার্ডকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত 50 লক্ষ রেশন কার্ডকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী দিনে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই সমস্যা তুলে ধরতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে বলছে এর ফলে এক বছরে 3,000 কোটি টাকা তার বাঁচবে, সাশ্রয় হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2011 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত ক্ষমতায় আছে, এই 10 বছরে প্রায় 30,000 কোটি টাকার যে সরকারি সাহায্য কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে গেছে। তাহলে এই ভুয়ো রেশন কার্ড যদি থাকে তাহলে এতদিন পর্যন্ত এই 10 বছর ধরে এই সব টাকা কেন্দ্র সরকারের টাকায় কাদেরকে পিডিএস এর মাল দেয়া হলো, কাদের কাছে এই টাকা গেল, ভুয়ো অর্থাৎ ঘোস্ট রেশন কার্ড হোল্ডার কারা ছিল, এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ এটা যেমন তেমন সংখ্যা নয়, 30,000 কোটি টাকারও বেশি টাকার দুর্নীতি হয়েছে যার সাথে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এবং তার নেতারা জড়িত। এই জন্য এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। 30,000 কোটি টাকা জনগণের ট্যাক্সের টাকা, সেই টাকায় ভুয়ো রেশন কার্ড হোল্ডারদেরকে টাকা মাল দেওয়া হয়েছে, রেশনের মাল দেওয়া হয়েছে, গরিব মানুষের মুখের মাল নিয়ে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি তদন্ত হোক এবং তদন্ত করে একে বের করা হোক কারা এর সাথে। ধন্যবাদ স্যার। श्रीमती गोमती साई। धन्यवाद सभापति महोदय जी।
मैं अपने संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जिला जसपुर के किसानों के सामने आने वाली परेशानियों की ओर आप ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ किसान बड़ी तादाद में टमाटर, आलू और मिर्चा की पैदावार करता है। जसपुर जिले के विकासखंड पत्थलगांव, लुड़ेक, सन्ना, मनोरा आसपास के अन्य क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को अपनी पैदावार औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है, जिसे किसानों को उनकी पैदावार का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस कारण यहाँ का किसान बेहद गरीब और कर्जे में डूबा हुआ है। क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो जाए तो यहाँ के किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जीवन जीने में बहुत सुधार होगा। अतः मैं आपके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी से यह मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में तत्काल फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पहल करें, जिससे इस योजना का लाभ यहाँ के किसानों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री श्याम सिंह यादव जी, एब्सेंट। श्री अरुणा साव, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती गीता कोरा। महोदय, पिछले 2 वर्षों से देश कोविड जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के साथ ही कमरतोड़ महंगाई और लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। देश में लगातार शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, जिसमें देश के नौजवानों ने ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MCA, MBA ग्रेजुएट जैसी डिग्रियां आज लेकर भी नौजवान सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। उनके माँ बाप ने न जाने कितना कर्ज लेकर, जमीनें बंधक देकर उनको पढ़ाई लिखाई कराई, और आज बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण लगातार लोग लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और ये दिनों दिन ये संख्या भी बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि देश भर के श्रम नियोजन निबंधन केंद्रों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ 30 लाख से भी अधिक लोगों ने निबंधन कराया है, परंतु केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है जो इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकार क्या न्यूनतम जीवन यापन गारंटी योजना लाकर इन बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी? वैद्यलिंगम जी। Honorable Speaker, sir, Puducherry suffered a lot because of the flood in the last monsoon. Houses submerged in the floodwater in Bahur Taluk, Velinur Taluk, Pondicherry town and Karaikal area also. So much of people affected a lot and lost their properties. Farmers are affected because of the flood in the Bahur, Velinur, Ariyanguppam and Karaikal area. Paddy crops are totally affected and farmers feel helpless and find no way to get out of this. It occurs once in 2 years because of these farmers and people in Pondicherry affected areas. At the same time, in summer, the people are affected because of the salinity in the drinking water. இங்கு குடித நீர் வருகின்ற நேரத்தில் தண்ணீர் அதிகமாக உப்புத்தன்மை மாறுகின்ற நிலை ஏற்பட்டுகின்றது. And also, farmers also affected because of the water shortage for the irrigation and drinking water problems. The state government give only temporary cash relief to the affected people. At the same time, the state government not able to find a permanent solution. So I request the Jal Shakti Minister to find a way by sending a team to prepare a DPR for it. If it is taken place in urban and poor people in the villages are benefited, and the farmers also raise their crop without fear of flood. Once again, I request the Jal Shakti Minister to send a team for prepare a detailed DPR. Thanking you, sir. Thank you, Sri Gaurav Gogoi. Thank you, Chairperson, sir. Sir, I raised my concern regarding the inadequate budget for Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0. Budget 22-23 saw only a marginal 1% increase
in the allocation for the nutrition schemes from 20,000 crore in the previous year to 20,263 crore. So this is just a 1% increase. Whereas a study from Center for Policy Research has shown that the approved budget is only 41% of the cost that is required to reach 100% of the estimated target population. So it is also of concern to note that between 2016 and 2021, the number of beneficiaries of the supplementary nutrition program fell by 19%, whereas in the same time period, the number of children have increased. So I request the ministry to look at the data again. Thank you. And again, I would like to remind that not only are ICDS schemes poorly underfunded, but are also poorly planned. It is a matter of great regret that neither has Portion 2.0 been approved, nor the guidelines for the ICDS schemes been completed, even in December 2021, 11 months after the government has announced their consolidation. Thank you very much. Thank you, Shri Guman Singh Damu. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश की एकता और अखंडता और हमारी संस्कृति, देश की एकता और अखंडता में हमारी देश की संस्कृति की सर्वाधिक भूमिका रही है और जो हमारे साधु संत महात्मा रहे हैं, इन्होंने हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को मजबूत किया है। ऐसे ही हमारे 13 पंथ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो इस समय देश में अहिंसा का शंखनाद कर रहे हैं। महाश्रमण जी अभी तक 3 देशों की और 20 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और 18,000 किलोमीटर अहिंसा यात्रा पूर्ण की है और 27 मार्च को तालकटोरा मैदान में उनका समापन होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस मार्ग से आचार्य श्री महाश्रमण जी गुजरे हैं, उस मार्ग का नाम अहिंसा मार्ग रखा जाए। दूसरा, जो हमारे इस यात्रा का उद्देश्य है, यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम सद्भावपूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करेंगे, हम सद्भावना पूर्वक ईमानदारी का पालन करेंगे और हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले बच्चों को ये संकल्प दिलाएंगे तो वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री लव श्री कृष्णा, श्री मोहन भाई कल्याण जी कुंदरिया, नॉट पर्सन, श्री नारायण भाई भिखाबाई, नॉट पर्सन, श्री राज बहादुर सिंह जी, नॉट पर्सन, श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आज हमारा देश आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाकर पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है। इसी संदर्भ में मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित ऐतिहासिक एवं विश्वविख्यात भगवान श्री वर्मा जी की पावन नगरी और प्राचीनतम धार्मिक स्थल तीर्थराज पुष्कर का भी सर्वांगीण एवं समग्र विकास कराने हेतु बजट वर्ष 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की महती स्वीकृति जारी कराकर मुझे अनुग्रहित करावें, ताकि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की नगरी की धार्मिक महत्ताओं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के साथ साथ जन आस्था की भावनाओं का सम्मान बना रहे। सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर सरोवर के पर्याप्त एवं स्वच्छ जल आपूर्ति की सुनिश्चितता के साथ साथ सीवरेज के गंदे पानी की आवक को सरोवर में जाने से रोकने की महती ठोस योजना बनाकर एवं क्रियान्वित किया जाए। नंबर 2, तीर्थराज पुष्कर स्थित पुष्कर सरोवर की श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना करने के पश्चात उसके घाटों एवं परिक्रमा मार्ग को स्थित अत्यंत खराब एवं बदहाल होने से प्रक्रिया करने में अत्यंत कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। अतः इस हेतु सक्षम कार्रवाई कराकर घाटों एवं परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद। तीर्थराज पुष्कर स्थित सीवरेज लाइन लगभग 35-40 वर्ष पूर्व बिछाई गई है।
इसकी स्थिति वर्तमान में जनसंख्या के विस्तार के आधार पर बहुत खराब एवं दयनीय स्थिति है। अतः सीवरेज लाइन जाम हो गई है। इसके फलस्वरूप स्थानीय वासियों के साथ साथ देशी विदेशी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सीवरेज लाइन का तीर्थराज पुष्कर माइनर डिटेल्स नहीं चाहिए। तीर्थराज पुष्कर एवं उसके आसपास स्थित धार्मिक ऐतिहासिक एवं प्राचीनतम मंदिरों को पर्यटन स्थलों के आधार पर कॉरिडोर बनाकर विकसित कराने की महती आवश्यकता है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चारों बिंदुओं को कराएं ताकि जगत पिता वर्मा जी के मंदिर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना लोकसभा के अंतर्गत धामपुर विधानसभा में शेरकोट के पास से खो नदी गुजरती है। इस नदी के किनारे काफी संख्या में गांव बसे हुए हैं, जैसे बेनीपुर कोपा, मंदोरा, नाथाडोई, नंदगांव, नया गांव, हादकपुर, बिरामपुर आदि। इन गांवों में बरसात के समय लोगों का जान माल और फसलों को काफी नुकसान होता है। इसमें से दो गांव, नंदगांव में बिरामपुर की स्थिति तो बहुत ही खराब है। इन दोनों गांवों का इस बार बरसात